Nanjana Chalakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Tatati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Judha Padakamalam Sri Gurun Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sahakana Raghunathan Bitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Harijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahakana Lalita Sri Vishakan Vidamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sate Devi Pranamami Hari Priye Vansha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Bhavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasati Gauda Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Being very angry and biting his reddish lips with his teeth, Krishna, with false tears in his eyes, broke the container of yogurt with a piece of stone. Then he entered a room and began to eat the freshly churned butter in a solitary place. We are reading today from Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 9, entitled Mother Yashoda Binds Lord Krishna. Text 6. This is the section of the Bhagavatam and the particular verse that is for the ongoing classes every day. Some exceptional verses from another part of Bhagavatam were selected the last few days. We're reading about the Damodar Leela, wherein the Absolute Truth, Parabrahman, in the form of a very small baby child, Krishna, is it performing pastimes in Gokul in such a way to conquer the hearts of the devotees and ultimately give every living being the opportunity to be attracted to the infinite sweetness of Krishna. In conventional religion or spirituality,
God reveals himself as an all-powerful creator, maintainer, and destroyer of all. All that exists. Pronounces laws, absolute laws that are meant for everyone to follow, and gives heavenly rewards or hellish punishments to those according to how they respond to those laws. And that absolute truth or God manifests incredible, inconceivable power, strength, magnificence. And people obey. And gradually, by obeying out of fear, after some time we become purified, and love awakens from within us. Of course, sometimes human beings, they attach their own false egos, ahankars, upon their particular conceptions of God. And if God is an all-powerful destroyer, then on behalf of God, we can be all-powerful destroyers. If God conquers everything, we should conquer everyone, according to our conceptions. But actually, the power of God is not supposed to boost our ego. The power of God is meant, by understanding it, to humble us. Here we find the absolute truth, the cause of all causes, the supreme source of everything that exists, as a very innocent, beautiful little baby who's just learned how to walk. And although, as the Almighty God tells people to be obedient, here he's acting very disobedient. Why? Some people, they don't understand who Krishna is. They say, how does God expect us to obey him if he doesn't obey? How does he expect us to follow rules if he doesn't follow rules? Krishna, his power, he has a Sudarshan chakra. When he was only 1 or 2 days old, he showed us what he could do to Putana. In the same little size he has, he delivered this incredible demon. There is no possible person who could be as demoniac as Putana in today's world. Yes, we have some cruel people. We have some terrorists, but can you imagine if Putana was here today? She was very evil. She was killing babies by the thousands. And she could manifest a form 12 miles in size. Do you know anyone who could do that?
She was extremely powerful. What to speak of Agasura, Pralambasura, Keshi, Aristasura. Krishna, in his very childlike way, he would deliver all of them. He would not only stop all their atrocities, but he would give them liberation. Say no to self-employment if you want to be a business owner. Self-employment is a situation where you... What government administrative Supreme Court justice can give a person liberation? What to speak of elevation to Vaikuntha? Can you show me any policeman or judicial body that can give the worst criminal the position of Krishna's mother in the spiritual world? But Krishna, as a little baby, could do all these things. So when he's acting in this way, when he's performing these pastimes, it's simply to give pleasure to his devotees and to attract the hearts of all the world. We all have our free will, whether we're willing to open our minds to be attracted by Krishna's beautiful pastimes. The ultimate power of God is God's beauty, God's love, God's sweetness. It is infinitely greater than even his powers. It is his greatest power. Because he is Rasa Bihari. Rasa Bihari means in the spiritual world, and when he comes to this world, his only real purpose ultimately is to enjoy loving relationships. We are conquered by the love of Krishna, and Krishna willingly is conquered by the love of his devotee. In this beautiful story, a revelation of the spiritual world, Yashodamaya is churning yogurt into butter. And as she's doing it, she's singing wonderful songs about Krishna. It's very early in the morning. And as she's singing about Krishna, thinking about Krishna, her motherly love intensifies and takes the form of milk that starts flowing from her breast. This is an expression of her love. So Krishna, who's in bed, he wakes up and becomes hungry to drink that milk. In other words, Krishna is hungry to taste the sweetness of his devotees' love. So little Gopal runs to his mother, and with one hand he holds the churning rod and stops her from churning, and basically tells her, now it's time to feed me. No more churning. And then he climbs on her lap, and she begins to feed him her milk. As he's enjoying, and she's enjoying, looking at his beautiful, beautiful face, the ecstasy of her heart is increasing at every moment. And as the ecstasy increases, the milk gets sweeter, because the milk is her ecstatic love. So her milk is ever increasingly getting sweeter as Krishna's drinking it, as her love is increasing, looking at the beauty of Krishna's face.
And Krishna yegatamam prapadyante tams tataiva bhajamyaham. Krishna reciprocates according to how a devotee approaches. So as her milk gets sweeter, seeing the beauty of his face gets more and more beautiful. To Yashoda, it's ever increasing. In this material world, no matter how beautiful people are, they get tired of looking at each other. They always have to put on some new dress or some new cosmetics or something like that. But they get tired of looking at it. But Krishna and his devotees, this is the spiritual platform. Krishna's beauty is ever increasing. And this is achintya, inconceivable. This is the heart of inconceivability. How could the supreme, all-pervading, unlimited beauty increase in beauty infinitely for the rest of eternity? Does that make sense? Doesn't make sense. Can't make sense. But that's why it's the absolute truth. It's beyond our imagination. Krishna is the very summit, the culmination, the supreme whole of all beauty. How could something be completely whole? Completely whole means it contains everything. There's nothing beyond it. Yes? That's what whole means. Om Purnamada Purnamidam. Krishna is the complete, the absolute truth is the complete whole. It contains everything. Nothing can exist outside of it. But yet, it's ever increasing at every moment. For eternity. That is Krishna. Inconceivable. So Krishna is, she's seeing, her love is increasing, Krishna's beauty is increasing, her milk is getting sweeter and sweeter and sweeter, and Krishna's enjoying it. And what a beautiful Leela of love. And suddenly, she hears something and she looks over, and the milk is boiling over in the next room. She puts Krishna down. This was an emergency situation. It's not something that you just think about. She didn't consult any Brahmins. She didn't get any scriptural references. The milk was boiling over. It's immediate. So she just put Krishna down and ran. Instinctively, intuitively. And the acharyas asked, why in the world would she put Krishna down for some milk boiling over? Yashodamai, because that milk was meant for Krishna later than the day. And it was special. Pushpaganda milk. It was from the best. Yashodamai, she would get the best grasses. These grasses were, she would water the grass with the milk of the 8 best cows of all the 108 or 900,000 cows of Nanda Maharaj. She would water the grass with these cows, and she would feed the best cows only that grass, the ultimate best grass to the ultimate best cows. And that milk, it had the fragrance of lotus flowers. Now in Kali Yuga today, even lotus flowers hardly have any fragrance. Vrindavan Kadamba flowers are very nice fragrance. But this was very unimaginable fragrance, this milk.
Now, for those of you who may drink milk, you don't usually think about its fragrance so much, but this is very, very, very sweet, very delicious. And when she would use that milk to make preparations for Krishna, like sandesh, or burfi, or kheer, she would make so many nice preparations for Krishna. And Krishna would enjoy so much. So she was thinking in terms of the future. Krishna was thinking only of the moment that he was enjoying now. But that's the way mothers are. That's the way parents are supposed to be. They're supposed to be thinking of the future of the child. Usually children, they're thinking of the moment. I want to play. And the parents say, no, it is time for you to go to school. Well, what is the use of school? I don't like school. I like play. Yes? But for the future, you'll be happy because you go to school. The nature of little children, especially babies, they're not so much planning for the future. They want immediate happiness. But the parents plan, their duty is to plan for the future. And at this end, harmonize, balance that with the present. If we do one or the other, it's not going to have a good result. If we're not thinking of the present moment and we're only thinking... Last 4 years, I have made over 40 crores. Now, you must be thinking of the future, it could create havoc. And if we're only thinking of the future and not if we're only thinking, well, yeah, I don't remember what I just said, but it's important to consider both and to address both. So Yashoda Mai put Krishna down to save the milk that would nourish him for the rest of the day. And in her mind, she must have been thinking of all the incredibly delicious things she was going to do with that milk for Krishna. She had her plan. So she ran. She made her priority. But Krishna now we see that he's becoming very angry. His anger is not actual anger, it's the source of all anger. But it's ultimately meant always for the devotee's well-being. He wanted to give Yashoda Mai the highest happiness, ever-increasing, loving relationship. So he bites his lip with his teeth, and they're very new teeth too. And he starts to cry. False tears, Srila Prabhupada explains. How could the absolute truth have anything false? Usually we say, when we challenge someone, we say true or false. Yes? Is this true or is this false? Well, the absolute truth, everything is true. But within that absolute trueness is perfect falseness. Because it's simply for the sake of increasing loving relationships. It's like churning the truth and getting so many variegatedness within that truth for the purpose of enjoyment, spiritual enjoyment.
and he picks up a stone and breaks the pot of yogurt. And since I'm not giving Srimad Bhagavatam class tomorrow, I'm going to tell you what's going to happen tomorrow. And then he runs over to another room and he takes a grinding mortar, wooden for grinding spices, and he climbs up on it. And there's nice yogurt and butter, freshly churned butter actually, that's hanging from the ropes from the ceiling. It's hanging from the ropes of ceiling so that monkeys can't get it, and so that Krishna can't get it. But Krishna climbs up and gets it and eats it and calls the monkeys of Vrindavan, and the monkeys come into the courtyard and he's feeding them with his own hand. He's giving each of them, he's distributing. It's food for life. It's like midday meals. Krishna's giving the poor monkeys nice butter. And they're already happily eating. Can you imagine taking butter churned by Mother Yashoda with her love for Krishna, and Krishna's putting it in his mouth, and then he's taking his hand out of his mouth, and he's taking handful and putting it right in your hand directly. How fortunate are those monkeys? The monkeys are in complete transcendental happiness eating this butter. They're tasting. What a fortune to be a monkey in Vrindavan like this. Yashoda Mai is, when she's milking the cows, she's only thinking of Krishna's her love for Krishna. And then when she turns it into yogurt, she does it in her love for Krishna. And when she's churning, there's tears in her eyes and milk of love is coming out of her breast, and she's churning and singing beautiful songs for Krishna, and all that love is going directly right into the butter. And then Krishna's accepting it, and he's eating it with love. And as he's eating the butter, it's becoming his Mahaprasad. What spiritually surcharged, empowered Mahaprasad that butter is. And then Krishna is personally, with his own hand, with love and compassion, he's giving it to the monkeys. And all that love and compassion is going into the butter too. What is that taste? Those monkeys must have been absolutely intoxicated. And just then Yashoda Mai, she comes back and she sees the mess that Krishna created. There's the pot all broken. She follows his little buttery footprints into another room, and she sees Krishna taking all this good butter that she made for him and giving it to monkeys. And there's so many monkeys. They're all over her house. Yes? Krishna's calling all these monkeys right into her house. She smiles. But as a mother, she has to teach Krishna proper lesson. So she picks up a stick, little stick. She would never ever hit Krishna with that stick. But as a mother, she wanted to show him the stick and say, if you do this again, then I will hit you. And then Krishna would, I will never do it again. So she came up behind Lord Krishna
And as soon as she started coming very quietly, she was secretly coming behind. The monkeys. They saw Yashoda Maya with a stick. They immediately ran away. They started jumping out windows and jumping into trees and screaming, and there was fear in their eyes. Now this is a very serious pastime. The psychology in it is so deep. We read, Bhajahude manasri nanda nandana abhayat sharanara vindare. When we take shelter of Sri Nanda Nandana, we become fearless. Well, these monkeys, they took shelter of Sri Nanda Nandana. They were eating the butter from the hands of Sri Nandananda, being nourished by his ecstatic love. But when they saw Yashoda, they became very much afraid, spontaneously afraid. They screeched and ran away. They were so afraid they were willing to leave that incredible scene of taking butter from the hand of Krishna. So is this a contradiction? This is achintya beda beda tattva. It is simultaneously a contradiction and not a contradiction. How is that possible? It's not possible. That's why it's transcendental, because it's not possible. Because their fear was nothing like the fear in this material world. Fear in this world is fear of death, fear of losing something that is very dear to us. And fear in this world, it inhibits happiness. But this fear, on the transcendental level, is actually the perfection of fearlessness. These monkeys are totally fearless because they have taken shelter of Krishna. But the fear is the love of Yashoda. They're overpowered by her love. And her love can make Krishna cry. In fact, even Krishna became afraid. He followed the monkeys. The story gets even more exciting, more deep. The monkeys were afraid. How could the monkeys be afraid if they took shelter of Nanda Nandana? When anyone who takes shelter of Nanda Nandana becomes fearless. Well, Nanda Nandana became afraid. So what to speak of the monkeys who took shelter of him? He jumped off the grinding mortar and ran away in fear. And Yashoda Mai was chasing him, and he was running. He was running fast. And she was running fast. And he was running faster, and she was running faster. And they were running. And flowers were falling from her hair, and her sari was becoming loosened. And the acharyas tell us that the Upanishads describe the absolute truth as faster than the wind, faster than the fastest. Nobody can catch the absolute truth. But the absolute truth willingly is captured by the love of a devotee. So Yashoda Mai catches Krishna. And Krishna is so much afraid. We read here in the words of Shukadev Goswami and Satyavrat Muni from Padma Purana in his Damodaraskakam gives a beautiful picture of this scene.
some possibility to escape, but Yashodamai is holding him. Very gentle, but tight enough so he can't get away. He's trapped. And he's telling his mother, I won't do it again. Please don't hit me. Put that stick away. Little Gopal afraid of a little stick. And it wasn't like a big bamboo. What do you call them? Latis or something? It's just a little twig. He wasn't afraid of Putana. A little later, he's not going to be afraid of Trinavarta or Shakatasura or Vatsasura. He's not even afraid of Indra. But he's afraid of this little stick. He's crying, please put that stick away. And Mother Yashoda throws the stick. So this beautiful pastime, it unfolds, and it has been told and retold hundreds of millions of times by great scholars, philosophers, and devotees throughout the ages. Krishna is Hari, which means one who steals. And he steals our hearts. When our heart becomes soft and sweet, like freshly churned butter, then Krishna will steal our heart. What makes the heart hard? And what makes the heart soft? This is what devotees must be very careful to understand. Srila Rupa Goswami explains real surrender to Krishna, in order to facilitate that to come about within our own lives. Two principles is we must accept what is favorable for devotional service and reject what is unfavorable for devotional service. We accept what makes the heart soft and we reject what makes the heart hard. Arrogance, egoism makes the heart hard. Humility makes it soft. Greed makes the heart hard. Generosity, a service attitude, makes the heart soft. The modes of passion and ignorance make the heart hard. The mode of goodness makes the heart soft. When we chant the holy names of the Lord, it's like churning the heart. The churning makes it very soft, very sweet. But if while we're churning, if we engage in sinful activities, finding the good qualities in others makes the heart soft. Finding faults in others makes the heart very hard. This fault-finding propensity. So we have these 10 offenses to the holy names. We have these 4 regulative principles. We have the understanding of Vaishnava etiquette. All these principles are there to make our heart very soft, so that when we churn it with the chanting of the holy names, then
Lord Hari, Krishna, Makanchor will be very attracted to steal our hearts. This is a science. And we find among devotees of the Lord, sometimes, Srila Prabhupada explains, great personalities, they could be softer than a rose or harder than a thunderbolt, depending on what is required to serve with humility and devotion. So people who have soft hearts in Krishna consciousness, their heart may be very, very soft with love, with compassion, but at the same time, greatly determined. Krishnadas Kaviraj Goswami tells us that Raghunath Das Goswami, his determination to follow the regulative principles, he chanted 200,000 names every day. He offered 1,000 Dandavat pranams, obeisances to Vaishnavas every day. 1,000 obeisances to Krishna every day. He would do parikrama of Govardhan every day. How did he have time for all this? Somehow or other. He just had such enthusiasm. And he would just not miss. It says, Kaviraj Goswami tells us, the observance of his determined vows were like the lines in stone. It's like you see the lines in this marble. Marble is stone. No matter how much you cut deeper and deeper and deeper into the marble, the lines are still there. Yes? Like lines in stone. They are just there permanently. They can't be erased. You can't erase a line in marble. Of course, sometimes when they make deities, they paint it so you don't see it. But later on, the paint comes off and then you see it. You can't get rid of it. You could cover it, but you can't get rid of it. The lines in stone. That's the determination of a devotee. So a devotee could be very forceful. Arjuna, his heart was soft like freshly churned butter. But yet for Krishna's service, he fought the battle of Kurukshetra in such a heroic and fearless way. And that balance is a very, very important part of the true understanding of bhakti. It's not that bhakti means our heart becomes soft so we become so sentimental that we're not willing to boldly carry out the order of Krishna. And at the same time, the tendency is, in the name of carrying out the order of Krishna or Guru with determination, we could become very hard-hearted. Hanuman is another example. Who could have a softer heart than Hanumanji? When Hanumanji was crying in separation from Ram and someone said, Ram is in your heart, no need to cry. And Hanuman was so enthusiastic to see Ram. This is enthusiastic, lolium. He ripped open his chest
and ripped open his heart. He wasn't concerned with anything except seeing Ram. How many of you have that enthusiasm? He didn't even think about it. You know, if you rip open your chest and rip open your heart, most of us would die. But Hanuman, Krishna reciprocated with his enthusiasm in such a way that there was Ram and Sita. They actually, just to save his life from ripping anything else open, they actually incarnated and appeared personally within his heart, saying, "Here we are, here we are." Be happy. Sita was blessing him, Ram was smiling, and Hanuman started crying tears of ecstasy. He knew that he was, and I guess he closed everything up after that. Because he knew the Lord was in his heart. That's all he needed to know. He didn't have to see them anymore. He knew they were there. So beautiful. So Hanuman, such a soft-hearted, loving person. Absolutely compassionate. But yet, when he was face to face with Ravana, he told, imagine, he's all alone. And you have Indrajit and all of the great military generals and the armies of Ravana surrounding you. And Ravana's right there. And Hanuman said to Ravana, "You are a fool, you are a coward." Now, if there's anything that is an insult to a Rakshasa warrior like Ravana, it's to call him a coward. Yes? In front of everyone. He publicly blasphemed Ravana in the worst possible way. That was his fearlessness. So bold, so powerful, so fearless. But yet his heart was like freshly churned butter. So this balance of being bold and determined in our devotional service according to the need, and at the same time totally humble, trinadapi sunichena, soft-hearted and compassionate, that is a Vaishnava. Krishna steals our heart when we become like that. He is Makan Chor. And ultimately, Krishna steals everything. The name Hari refers to so many different aspects of Krishna's Leela. In this material existence, in the form of time, Krishna is Hari. He's going to take away everything from everyone. There's nothing we can hold on to in this material world. Our body, our possessions, our family members, friends, and loved ones, our abilities. We can become great musicians, we can become great scholars, we can become great artists, we can become great business people, great statesmen. We can know so many things. It's all taken away, either in life or in death.
And some people, the solace is, even though I may not be able to enjoy it, I could leave it for my descendants. I can leave my wealth, I could leave my fortune, I could leave my reputation for my descendants. But all of that is going to be taken away too. Nothing. We can't hold on to anything, and nobody else can hold on to anything that we have given them. Everybody must die. And everything's going to be lost. It's just a matter of time. We have so many nice things in the museums, yes. We have bones of dinosaurs. Have you seen? Do you have those in India? I don't know, but I remember in the Field Museum in Chicago, near Grant Park, where I got tear gassed by the police once. I remember I was in a demonstration for peace, and the Chicago police charged and attacked us and started shooting tear gas, so we ran away. Because they had clubs and helmets. So I was running. I was a pretty fast runner back when I was a teenager. So some of my friends got beaten up, but I actually ran out. But everything gets taken away. I'm not a fast runner anymore. But anyways, I ran and ran into the Field Museum. And then I was face to face with this Tyrannosaurus Rex, this man-eating dinosaur. Yes, but he was just a skeleton. I remember when I ran inside, right in the main lobby, there was this big, gigantic dinosaur. They got his bones and reassembled him. So he was like, he had gigantic teeth. Can you imagine how much that cost? It's a fortune. So we're thinking we're preserving history by keeping these dinosaur bones. But even they're going to be lost. It's just a matter of time. Nothing is permanent in this world. I remember thinking that this dinosaur is probably reincarnated as one of the policemen outside. Beating people with sticks. But eventually the whole Earth planet is just, it's going to go bloop. It's going to be finished. That's the nature of material existence. Dukkhalayam ashashvatam. Everything is temporary. So from a material perspective, the Lord is Hari. He takes everything away. And there's a beautiful verse that Srila Prabhupada would quote often, that when Krishna wants to show his special mercy to his devotee, he takes things away. So that we realize that ultimately there's only Krishna to turn to. Because the tendency is we take shelter of things. Kali Yuga people love things and use people. Real culture is to use things and love people. And ultimately,
the real person is the Atma, the soul. Love for the soul. Because the Atma is nahanyate hanyamane sarire. It does not die with this body. The Atma is unaffected by the annihilation of the entire cosmic manifestation. That's you. That's me. That's us. We are the eternal soul. You know, if we get bit by a mosquito, we think, oh, why is this happening to me? Yes? Or if we break our arm or our leg, we're thinking, oh, how horrible. But the reality for the Atma, the eternal soul, what to speak of injury of the body? What to speak of death of this little body? The Atma is totally unaffected by the annihilation of the entire universe. It's unaffected by the annihilation of the entire cosmic manifestation. In the dream state, we're identifying with this body, we're identifying with the things and the people related to this body, so we're feeling pain. But the Atma itself is transcendental. Aparayami tastvanyam prakritim vidime param. It's beyond the 8 elements of material existence. The Atma is part of Krishna. That's who we are. That's who we've always been. We're transcendental. Krishna consciousness is to give us that understanding. And the tendency is we become so distracted by temporary situations that we forget who we are and what our real happiness is. So from a material perspective, Lord Hari is taking away everything that exists. Everything that we identify with, everything we're attached to, Krishna's taking away. That's Hari. Or from a spiritual perspective, Hari is stealing our hearts. Filling our hearts with this param dristvani vartate, with such a higher taste. Therefore Rupa Goswami warns us, if you are attached to your family, friends, your possessions, to anything of this world, then do not go to Keshi Ghat on bank of Yamuna, because Krishna's there. His name is Govinda. He's standing in a threefold bending form playing his flute. And if you see those lotus-like beautiful eyes and his wonderful lips, which are beaming in the moonlight, you see that complexion, which is like the tamal tree. You become so attracted, so intoxicated, that beauty of Krishna steals your consciousness away from everything of this world. That's actually what it means to be a Bhai Charana Ravindare, to be fearless. When Krishna steals your heart, steals your mind, Krishna's name is Manohar.
पालन कर रहे हैं और हमने महाराज जी के प्रवचन से शुरू किया। आइए सब मिलकर भजन गाएंगे, उसके बाद हम लोग गुण कीर्तन सुनाएंगे। ओहे वैष्णव ठाकुर दयार साधु दासी को न कोई वैष्णव ठाकुर दयार साधु दासी को ओहे वैष्णव ठाकुर दयाल सागर हे दासे करुणा हो। हे वैष्णव ठाकुर दयाल सागर हे दासे करुणा हो। दिया पद छाया सुदूरे आमाय तुम्हार चरण हो। सुदूरे आमाय तुम्हार चरण हो। दिया पद छाया सुदूरे आमाय तुम्हार चरण हो। दिया पद छाया Jai Guru me, Jai Guru Sori, Jai Guru Dev Jai Sata Santa Devi Ram.
नहीं पाए हो हरि नाम संकीर्तन वैष्णव ठाकुर की जय श्री राधानाथ स्वामी महाराज की जय श्री राधानाथ स्वामी महाराज 72 व्यास पूजा तिथि महामहोत्सव की जय जय गुरु प्रेमानंदे हरि এটা প্রিয় করে দিচ্ছি। Hare Krishna, Dandavat Pranam, all glories to Srila Prabhupada. A very warm and hearty welcome to all the assembled devotees on this very auspicious occasion of the 72nd Vyas Puja celebrations of His Holiness Radhanath Swami Maharaj,
here at ISKCON DUMDUM. This is the third consecutive year wherein we are having this Vyas Puja celebrations in this center. I seek blessings from all the assembled Vaishnavas to bless us so that we can carry on this festival in a very nice way. We also beg for forgiveness if we make any mistake. His Holiness Radhanath Swami Maharaj was born on 7th December 1950 in Chicago. His parents, Jerry Slavin and Edith Slavin, named him Richard. As a young boy, he was always seeking for spirituality. He traveled to various countries, and while meditating one day, an inner voice told him that he must go to India. Finally, one fine day, he arrived in the holy land of India and at the borders. But he was not allowed to enter this country because he did not have the supporting documents to enter. The border security force argued, but Maharaj insisted. And finally, by Krishna's mercy, he was allowed to enter. He looked back at the border security force and thanked them and told them that one day he will do something for this country. He visited various spiritual institutions and also met many spiritual leaders. But finally, when he met A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, founder Acharya of the International Society of Krishna Consciousness, is when his search for his Guru Maharaj ended. His inner voice always told him that this is the Guru that he was always looking for. Maharaj was initiated in the year 1973 and he got his sannyas diksha in the year 1982. Maharaj has been pioneer for many projects of ISKCON that he has established, which include the Sri Sri Radha Gopinath Temple, Bhaktivedanta Hospital, the internationally acclaimed Govardhan Eco Village, the Barsana Eye Camp, and many such projects. Today, on this very special day, let us introspect, let us contemplate, let us dive into the memories of our experiences, our sentiments, and our realizations for Maharaj. Without wasting much time, I request His Grace Achyut Gaurang to please enlighten us with the significance of Vyas Puja's great. I request His Grace Radhanath Prabhu, please be ready with his offering. Hare Krishna. Om Gyande Manasya Jnana Shlakha Chakshurmutru Tasya Shri Guru Namo Vishnupadaya Krishna Vishnu Guru Shri Radhanath Swami. तो अभी मैं जो भी रिक्वेस्ट किया है हरीश प्रभु ने, तो जो भी मैं बोलने जा रहा हूँ, ये एक्चुअली 12 फरवरी को जो श्रील प्रभुपाद ने अपने गुरुदेव हिज डिवाइन ग्रेस प्रभुपाद श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के व्यास पूजा में 12 फरवरी 1936 बॉम्बे में उन्होंने जो ग्लोरिफिकेशन किया था अपने गुरुदेव का, उसको ही बेस करके मैं थोड़ा सा उसमें से एक्सट्रैक्ट्स जो है शेयर कर रहा हूँ आज के महत्व के लिए। तो इसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो आध्यात्मिक ज्ञान है वेदों का, पहले बता रहे हैं कि गुरु परम ब्रह्म है जो वो एक है और इसलिए गुरु तत्व भी एक है और गुरु जो तत्व है वो कई रूपों में आते हैं इस संसार में और अभिन्न रूपों में आते हैं ज्ञान बांटने के लिए। इसलिए गुरुदेव की जो व्यास तिथि पूजा तिथि जो है वो कोई सेक्टेरियन इवेंट नहीं है, कोई सांप्रदायिक इवेंट नहीं है और ये यूनिवर्सल जो है प्रिंसिपल है। उसके बाद श्री प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो आध्यात्मिक ज्ञान है वेदों का वो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने उन्होंने प्राप्त किया था और फिर ब्रह्मा जी ने नारद मुनि ने व्यासदेव जी को, आगे माधव जी को और फिर आगे जो है गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को और आगे ये गुरु शिष्य परंपरा में आता है। तो यहाँ पे जो बता रहे थे प्रभुपाद कि उनके जो गुरुदेव हैं वो 10th डिसाइप्लिक रिप्रेजेंटेटिव थे
श्री रूप गोस्वामी के तरफ से, जो कि ओरिजिनल जिन्होंने प्रचार किया था श्री चैतन्य महाप्रभु का मिशन को। तो इसका मतलब क्या हुआ कि श्रील प्रभुपाद के जो डिसाइपल्स हैं वो जो है 12th जो है डिसाइप्लिक सक्सेशन डिसाइप्लिक रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं रूप गोस्वामी के इस मिशन में। इससे प्रभुपाद आगे बता रहे हैं कि श्रील व्यासदेव जो है वो ओरिजिनल जो है अथॉरिटी है वेदों के, भागवतम के, महाभारत के, गीता के, और जो गुरुदेव हैं वो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं श्रील व्यासदेव की, और इसीलिए जो है इस तिथि को जो है श्रील व्यासदेव पूजा तिथि मानते हैं। फिर आगे बता रहे श्रील प्रभुपाद कि जो शुद्ध ब्रह्म है वो अगर कोई इंटरप्रेट करता है उसको अपने मनगढ़ंत तरीके से, तो वो रियल गुरु नहीं हो सकता है, क्योंकि उसको जो है प्रॉपर प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा में उनको ट्रेनिंग नहीं मिली। इसलिए वो श्रील व्यासदेव के जो ग्रंथ है, जो ज्ञान है, उसको ठीक तरह से वो नहीं बांट सकते हैं, उसको एज इट इज वो नहीं बता सकते। यहाँ में बता रहे हैं कि पद्म पुराण में बताया है संप्रदाय मंत्रस्ति निष्फला बता। जब तक हमें प्रमाणिक गुरु से मंत्र नहीं मिलेगा, जिन्होंने गुरु शिष्य परंपरा में जिन्होंने जो आए हैं, तब तक अगर कोई मंत्र भी हमें मिलता है तो उसका भी कोई इफेक्ट नहीं है। तो इसलिए बता रहे हैं कि अगर हम जो है आध्यात्मिक ज्ञान को श्रवण करना चाहते हैं तो वो सिर्फ श्रवण हम प्रमाणिक गुरु के माध्यम से, जो गुरु शिष्य परंपरा में आए हैं, उन्हीं के माध्यम से हम ये ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि स्वतेश्वर उपनिषद में बताया है, यस्य देव पर भक्ति यथा देवा तथा गुरु तस्यादि कथिता हयार्थ प्रकाशन्ते महात्मना। जिसका मतलब यहाँ बताया, प्रभुपाद नाम बताते हैं कि जो महान आत्माएं हैं उनके प्रति अगर हमारा असीम विश्वास है, और भगवान के प्रति अगर हमारा असीम विश्वास है, गुरुदेव के प्रति अगर हमारा असीम विश्वास है, तभी जो है वेदों का जो ज्ञान है वो हमारे मन में, हृदय में प्रकाशित हो पाएगा। और हमारा जो ज्ञान है वो इतना अपूर्ण है, हमारे जो इंद्रिय हैं वो इतने अपूर्ण है, त्रुटिपूर्ण है, और हमारे जो सूत्र हैं ज्ञान के वो भी इतने त्रुटिपूर्ण है, इतने लिमिटेड है कि हमारे लिए संभव नहीं है कि हम आध्यात्मिक ज्ञान को पा सके। इसलिए प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं, श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि इसलिए हमें श्रील व्यासदेव या उनके प्रतिनिधि के पद कल्प चरणों में हमें समर्पण करना चाहिए, क्योंकि हम हर क्षण जो है हम प्रत्यक्ष प्रमाणों से धोखा हमें पार, और हमारा मन भी हमें धोखा दे रहा है, और इसलिए हमारा ज्ञान तरीका है वो जो है त्रुटिपूर्ण है। इसलिए प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमें अगर पूरा ज्ञान एज इट इज चाहिए बिना किसी अडल्ट्रेशन के, तो हमें श्री गुरुदेव जो श्रील व्यासदेव के मीडियम बन के आए हैं, रिप्रेजेंटेटिव बन के आए हैं, उनके पद चरणों पे हमें समर्पण करना होगा। जैसे कि प्रभुपाद इसमें बताते हैं कि भगवत चौथे अध्याय 34 नंबर श्लोक में तद विद्धि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यांति ते ज्ञानम ज्ञानित्न तत्वदर्शिना। मतलब हमें प्रमाणिक गुरु के पास जाके सेवा करनी पड़ेगी, उनसे प्रश्न करने पड़ेंगे, उनसे नम्र भाव से उनके पास जाना पड़ेगा, उन्हें समर्पण करना पड़ेगा, तभी जो है हमें परम ज्ञान, अपरम ब्रह्म का जो ज्ञान है हम हासिल कर पाएंगे। इसलिए जो है श्रील प्रभुपाद लास्ट में बताते हैं कि ये जो व्यास तिथि है, इसमें हम लोग जो है
हम लोग जो है इसमें उद्देश्य ये है कि हम सब मिलके आए और श्रील गुरुदेव जो कि श्रील व्यासदेव के प्रतिनिधि के रूप में आए हैं, उनके पवित्र चरणों पे हम समर्पण करें ताकि उनकी जो असीम कृपा है वो हम लाभ करें, उसकी भीख मांगे और उनसे प्रार्थना करें कि ये आध्यात्मिक ज्ञान जो है ये हमारे मन में प्रकाशित हो, हम इसे जो है एसिमुलेट कर पाए। हरे कृष्ण। तो आज की ये व्यास पूजा तिथि का आप लोगों को स्वागत है और ये श्रील प्रभुपाद जो है इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है 12 फरवरी 1936 बॉम्बे के लेक्चर में अपने गुरुदेव के श्री व्यास पूजा तिथि पर। हरे कृष्ण। Thank you so much, Achyut Varan Prabhu. We will now start the offerings. I request His Grace Radhanath Prabhu to please share his experiences with us. The time allotted to each speaker will be 5 minutes. After 3 minutes, the kartal will play, and after 2 minutes, you will hear the second ring. Thank you so much. His Holiness Radhanath Swami Maharaj की जय, श्रील प्रभुपाद की। तो गुरु महाराज से जब भी मैं मॉस्को में फर्स्ट टाइम जब मैं मिला तो महाराज का कोलकाता के ऊपर में हमेशा मैंने फोकस देखा। फर्स्ट इंट्रोडक्शन जब हम लोग महाराज पूछ रहे थे, हम 3-4 डिवोटीज गए थे, तो जैसे मैं बताया कि आई एम फ्रॉम कोलकाता, तो महाराज ने एक्सप्लेन किया कलकत्ता बर्थ प्लेस ऑफ श्रील प्रभुपाद। चौपाटी के डिवोटीज भी, सीनियर डिवोटीज बताते हैं कि महाराज का बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है कलकत्ता के प्रति। हम लोग भी देखे हैं कि महाराज एक बार जब एल्बर्ट रोड रेस्टोरेशन हो रहा था तो महाराज खुद पेंटिंग्स उन्होंने चूज किया और अमेरिका से वो खुद लेके आए और अपने हाथ में कैरिंग अपने हाथ में लेके आए दिल्ली में गोविंद प्रभु को बोले कि कलकत्ता के लिए है, तो कलकत्ता को देना है। महाराज जब एल्बर्ट रोड में फर्स्ट टाइम आए थे तो उस समय महाराज प्रैक्टिकली एवरी मतलब जो भी जितना भी मंदिर का कोई भी कोना ऐसा नहीं है जहाँ पर महाराज नहीं गए हों। तो महाराज हर एक जगह गए और वो हम लोग को साथ में लेके जा रहे थे और फिर देखने के बाद बताए कि वर्ल्ड में मतलब जो चीपेस्ट मटेरियल है वो इस मंदिर में लगा हुआ है, जो मार्बल बोले कि तो चीपेस्ट काइंड ऑफ मार्बल लगा के रखे हो। तो उस समय हम लोग महाराज से पूछते थे कि महाराज व्हाट शुड वी डू, मतलब गुरुसरे में मंदिर का प्लान था तो क्या करें। तो महाराज ने सबसे पहले बताया कि व्हाटएवर यू हैव, जब तक उसका हम लोग 100% उसको बेस्ट यूज नहीं करते हैं तब तक भगवान से हम कैसे आशा रख सकते हैं कि और ज्यादा मिले। और हम लोग देखते हैं कि कैसे जैसे ही एल्बर्ट रोड के भक्तों ने एल्बर्ट रोड को रिस्टोर करना शुरू किया तो कलकत्ता में चीजें बहुत पॉजिटिव होने लगी और धीरे धीरे हम लोग देख रहे हैं कि एल्बर्ट रोड के बाद फिर उल्टा डांगा जंक्शन रोड, भोपाल जन्म स्थान, न्यू टाउन में 20 एकड़ से भी ज्यादा जो लैंड जो भी अभी मिला है। तो ऐसा नहीं कि कलकत्ता, बहुत आप लोग सोचते हैं कि जैसे दिल्ली में हम लोग जाते हैं कि या डिवोटीज क्लेम करते हैं कलकत्ता अभी तक कुछ नहीं हुआ है, लेकिन देखा जाए तो कलकत्ता अगर हम लोग फॉलो करें अपने गुरु महाराज के बात को तो अपने आप चीज मैनिफेस्ट होगा। और महाराज बहुत ही फोकस है। इवन एल्बर्ट रोड के छत में जब हम लोग, ये उल्टा के छत में जब हम सभी लोग थे तो उस समय भी हमने पूछा कि महाराज अभी न्यू टाउन में मंदिर करें कि क्या, तो महाराज का देखेंगे कि जो भी इंस्ट्रक्शन होता है पूरा एकदम टू द पॉइंट होता है। उस समय महाराज ने बताया कि उल्टा डांगा का जिस दिन रिस्टोरेशन हो जाएगा उस दिन व्हाट टू स्पीक ऑफ कलकत्ता, मायापुर का भी जो चीज अटका हुआ है या लगता है कि प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, मायापुर का मंदिर भी कंप्लीट होगा और पूरे विश्व में वैष्णविज्म है वो उसका जो झंडा है वो फहराएगा।
So that was a very मतलब बहुत ही important वाक्य थे और पर्सनली हम सभी जो डिवोटीज हैं एल्बर्ट रोड के वो हम लोग देख लें कि किस तरह हो रहा है और इस्कॉन का सही में अगर आप देखेंगे इस्कॉन काफी आगे मतलब रिवाइवल अभी रिसेंटली यूके का जो प्राइम मिनिस्टर है इज कनेक्टेड टू इस्कॉन इंडियन ऋषि सुनक ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन जो कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि जो ब्रिटेन भारत को इतने सालों तक गुलाम बना के रखा वहां का हेड ऑफ द स्टेट विल बी इंडियन तो वो जब उनका न्यूज आया प्राइम मिनिस्टर बनने का तो सबसे ज्यादा पॉपुलर जो वीडियो था वो इस्कॉन में जाके वो आरती कर रहे हैं और प्रभुपाद से मिल रहे हैं दैट वीडियो बिकम वेरी पॉपुलर दैट बिकम अ न्यूज आइटम तो सबसे पहले उनके बारे में जब लोग निकाल रहे थे तो उनका इस्कॉन का कनेक्शन आया और ये देखिए अमेरिका में भी तुलसी गबार्ड जैसे प्रभुपाद के ग्रैंड डिसाइपल हैं तुलसी गबार्ड का आपने नाम सुना होगा वो भी एक दिन अमेरिका की प्रेसिडेंट हो सकती है तो इस तरह अगर हम देखें तो अगर जैसे महाराज ने बताया तो उल्टाडंगा मैं कंसिडर करता हूँ बहुत ही पावरफुल जगह है हिज ग्रेस आनंद मोहन प्रभु उसका इतना सुंदर तरीके से केयर कर रहे हैं और जिस तरह हम देखते हैं कि हमारे गुरु वर्ग जिस तरह बता रहे हैं उस तरह से चीजें मैनिफेस्ट हो रही हैं महाराज का हमेशा फोकस रहा है जितने भी आप लेक्चर सुनेंगे टू बिकम हम्बल सर्वेंट ऑफ दास दास अनुदास और होली नेम हरि नाम का आप जो भी है बहुत एसेंशियली चैंट करना तो ये जो दो प्रिंसिपल है वैष्णव सेवा और हरि नाम का जप ये दो चीज अगर हम अपने लाइफ में फोकस मतलब दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल अगर हम लोग वैष्णव को सर्व एक दूसरे वैष्णव को सेवा के लिए फोकस करते रहें और हरिनाम करते रहें एवरीथिंग एल्स विल मैनिफेस्ट ऑटोमेटिकली वो अपने आप होगा और कभी भी वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए महाराज का फोकस रहता है तो इसीलिए महाराज के इस पुण्य तिथि में हम सबको ये प्रिय करना प्रार्थना करना चाहिए कि कभी हमारे जीवन में वैष्णव अपराध ना हो और जितना भी हो सके हम वैष्णवों का सेवा कर सकें और हरिनाम जो हरिनाम है उसको सिंसियरली हम जप कर सकें अगर सिर्फ यही दो चीज हम कर सकें तो महाराज जो बताते हैं कि दीज आर द हाईएस्ट प्रिंसिपल तो हम महाराज से यही प्रार्थना कर सकते हैं कि जिस तरह महाराज ये दो प्रिंसिपल के ऊपर फोकस करते हैं तो हम सभी उसको फॉलो कर सकें हरे कृष्णा थैंक यू सो मच राधा रमन प्रभु महाराज की हमेशा कृपा रही है हम कलकत्ता वासियों पे कि नित्यानंद त्रयोदशी पे वो आते हैं हम प्रार्थना करते हैं कि इस साल वो जरूर आए और हमें अपना एसोसिएशन दे I now request His Grace Rashishwar Prabhu to please share his realizations and I request His Grace Navyogendra Prabhu to be ready after him. नमः विष्णु पदाय विष्णु दत्ताय विष्णु पदाय विष्णु दत्ताय श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवी को वेदांत प्रचारिणी मेरी विशेष सुनवारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 আমাদের পূজারীদের দেখাশোনা করে আমাদের কৃষ্ণানন্দ প্রভুকে বললাম যে প্রভু এখানে ব্যাস পূজা অনুষ্ঠান হচ্ছে তো
আপনি যাচ্ছেন তো? হ্যাঁ, প্রভু বলছে আমি যাচ্ছি। আমি জানি তাই, আমাকে তো বলছিল আমাদের বল্লভ চৈতন্য প্রভু হাত জোর করেন, তাহলে কি করি? হ্যাঁ, না না না, আপনি যান, আপনি যান, তাহলে আমি থাকি। আজকে ফাইনাল হলো যে আমি মনে করছি যে ও আসলে, আমি যেহেতু বেশ কয়েকবার আসছি, তো উনি বলছেন না না প্রভু আপনি যান, আমি থাকছি। ঠিক আছে, তাহলে আমার তাহলে বল্লভ চৈতন্য প্রভুর হাত জোর মিনতি করে বলছে আমাকে যে স্নেহ করেন, ওনার কথাটা আমি রাখতে পারবো। যাই হোক, একটা আশ্চর্য লাগে অ্যাকচুয়ালি, আমরা কলকাতায় ব্যাস পূজা করছি না, কিন্তু এখানে করছি। এই জন্য একটা আশ্চর্য বিষয় লাগছে যে বল্লভ চৈতন্য বহু কৃপা ভাজন হবে মহারাজের। এটা মানে আমার তরফ থেকে বলছি, যদিও আমরা একে অপরে যেরকম এখানে বা আমাদের ওখানেও শুনছি নাকি হচ্ছে নিউ টাউনে। যাই হোক, চৈতন্য মহাপ্রভু আমাদের মন গৌরাঙ্গ বিনে নাহি আর, মন গৌরাঙ্গ বিনে নাহি আর, হেন অবতার হয়েছে কি হবে, হেন অবতার হয়েছে কি হবে, হেন প্রেম পরচার, হেন প্রেম পরচার। মহাপ্রভু একটা ভক্ত এটা বলছেন, এতে আমরা দেখছি বা এই গুরুবর্গদের মুখে শুনছি, আমরা যারা ইস্কনে আছি তারা আমরা দেখছি এই চৈতন্য মহাপুর এক বিরাট পার্শ্ব ভক্ত প্রভুপাদ, যিনি ইস্কন প্রতিষ্ঠাতা করেছেন। উনি এই প্রচার মুখেতে তার গুরুদেবের নির্দেশে উনি সকলকে যেগুলা পাওয়ার যোগ্য নয় তাদেরকে পর্যন্ত এই প্রেম দিলেন। তার জন্য প্রেম প্রচার, সেই প্রেমের অধিকারী হলেন আজকে যে ব্যাস পূজা হচ্ছে মহারাজ। সেই প্রেম আমরা যে এখানে আসছি, আমরা এই আশা বন্ধে এখানে আমরা আজ তার ব্যাস পূজা অনুষ্ঠান করছি, যদি আমরা কিছু এই মহারাজের ছিটা ফোটা কিছু পেতে পারি এই আশায়। যাই হোক, অনেক সময় আমরা আশ্রমগত ভাবে অনেক সময় ব্রহ্মচারী থাকি, গৃহস্থ থাকি, বানপ্রস্থ থাকি, সন্ন্যাস। সাধারণত এমনি বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেখা যায় যে ব্রহ্মচারী এবং সন্ন্যাসী গুলো বেশি ভাগ্যবান, এটা সাধারণত বোঝা যায় বাহ্যিক দৃষ্টিতে। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় যে অ্যাকচুয়ালি অনেক সময় কিছু কিছু গৃহস্থ ভক্তগুলোও এত অপরচুনিটি হয়ে যায়, মানে অনেক সময় ব্রহ্মচারীরও নাক কান কেটে ফেলে, প্র্যাকটিক্যাল দেখা যায়। তা আমার অনুভূতিতে বলছি যে আপনারা অনেকেই এখানে গৃহস্থ ভক্ত আছেন, আজ যে বল্লভ চৈতন্য প্রভু এখানে করেছেন, কেন এই গৃহস্থ ভক্তগুলা উৎসাহিত এখানে আসা আমরা সকলে এসে করেছি। সেরকম বিশেষ করে আমি তো ভাবতে পারিনি আমাদের রাধারমণ প্রভু যে সত্যি সত্যি কৃপাটা কি যাবে, কার মাধ্যমে কিভাবে প্রকাশ হয়, গুরুবর্গগুলো আজ বলতে বাধ্য হচ্ছে যে কলকাতায় আমরা প্রভুপাদের শিষ্য হয়ে আমরা এই জায়গাগুলো উত্তরণ করতে পারিনি, আমরা চেষ্টা করেছি, কিন্তু গুরুদেবের কৃপাটা কি হিসাবে এইসব ভক্তের প্রতি
বর্ষিত হচ্ছে, আমরা এখন সচক্ষে দেখতে পাচ্ছি। ওহো ওহো ভাগ্য! যেরকম মহারাজের কৃপা ধন্য, তিনি হিসাবে এইসব জিনিসগুলো যেগুলা মানে জলের তলে না মাটি এরকম পাতালে বলা যায় এরকম ছিলেন, সেটা কি হিসাবে উত্তোলন হচ্ছে আমাদের সামনেতে, এই বিশেষ করে প্রভুপাদের জন্মস্থান এবং মূল প্রদান। ওহ ধন্য ধন্য! আরে গৃহস্থ হলে কি হবে, উনার বদনধরির যোগ্য আমার নয়। সত্যিকার বলতে গেলে যে এইসব ভক্তরা আমার থেকে অনেকে পরে আসছে, কিন্তু আমি অ্যাকচুয়ালি এতই দুর্ভাগা যে আমার সামনে এরা চোখে দেখিয়ে দিয়েছে ওই প্রভু এত হাজার হাজার ভক্ত প্রচার করছে। তাহলে এইসব কৃপাটা বর্ষিত হচ্ছে বলেই তো তারা করতে পারছে, নাহলে আমাদের আগের জন্মে আমরা কি ছিলাম? হ্যাঁ, আজ আমাদের তাদের চরণে যদি ছেঁড়া ফোঁটা লেশ মাত্র যদি হতে পারে এক বিন্দু, তাহলে সেটা অনেকটা করে দেখাচ্ছে ভক্তরা। অনমন প্রভু এত মিষ্টি ব্যবহার, মিষ্টি আচরণ দেখাচ্ছে, আমার অনেক পরে আসছে, কিন্তু এখানেও দায়িত্বতে আছে, ওখানেও দায়িত্বতে আছে, কম কথা নয়। এগুলো দুইটাই ট্রান্সেন্ডেন্টাল জায়গা। যাই হোক, অনেক কিছু বলার আছে মহারাজের, ভক্তরা অনেক বলবেন। আসল কথা আছে মহারাজের জীবন আদর্শ, জীবনেও শিক্ষা আছে, এবং আচরণ বলুন, শিক্ষা বলুন, কথা বলুন, গান বলুন, হৃদয়ে স্পর্শ করে। প্রভুপাদ যেরকম বিদেশি গিয়ে কীর্তন করতে করতে শরীর খারাপ হয়ে গেছে, খারাপ হয়ে গেছিল ওই গাছটার মধ্যে বসে, মহারাজের কীর্তন, মহারাজের হরিকথা হেন ব্যক্তি এখানে কেউ নাই যে তার ভিতরে নৃত্য করে না। এটা আমরা সকলেই কম বেশি অনুভব করি, যার যেরকম অধিকার। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম হরে রাম। আজকের দিনে বিশেষ করে মহারাজের জন্য এইসব ভক্তরা যেরকম আপনার আশীর্বাদে কিছু রূপান্তরিত করছে, তা আমি যেন এদের পদ ছাত্র ছায়াতে থাকতে পারি। এটা যদিও অসম্ভব মনে হচ্ছে, আমি যেন সত্যি সত্যি এনাদের আশীর্বাদ থাকতে পারি। His Grace Rajneeshwar Prabhu ki I request His Grace Navyogendra Prabhu to please come. Navyogendra Prabhu to please come and share his experiences with us. And I request His Grace Palak Partha Prabhu to be ready with his offering. हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओम विष्णुपादाय कृष्णनिष्ठाय बुद्धे श्रीमती राधानाथ स्वामी नामी। ओम विष्णुपादाय कृष्णनिष्ठाय बुद्धे श्रीमती वेदांत स्वामी नामी। नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारिणी देवी सुंदरवादी पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण। आज राधानाथ स्वामी गुरु महाराज का जन्म तिथि। ये जन्म तिथि बहुत ही हम लोग के लिए बहुत ही जरूरत है, क्योंकि जब गुरुदेव का वैष्णव होता है तो कोई वैष्णव वैष्णव होते हैं तो हम लोग के लिए बहुत कृपा आशीर्वाद मिलते हैं, क्योंकि इस दिन
लोग वैष्णव लोग बहुत ही कृपा करने के लिए तत्पर रहता है, इसलिए हम लोग की मौका मिलता है कि इस दिन थोड़ा उन लोग के बस कृपा ले और हमारा भक्ति को आगे बढ़े। तो आज इसकी एक पवित्र तिथि, क्योंकि शास्त्र में कहा है कि जीवे निस्तर लगी नंद सुत हरि रोने प्रकाश गुरु रूप धरी। गुरु साधारण चीज नहीं है, क्योंकि गुरु बहुत ही भगवान का प्रतिनिधि है। गुरु प्रसन्न होने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए गुरु को प्रसन्न करना चाहिए। ये हमारा मौका है कि हिज होलिनेस दादा गुरु महाराज का जन्मदिन है। सब लोग जानते हैं कि महाराज का सिंपलिसिटी बहुत, उनका हृदय बहुत ही सिंपलिसिटी है। उनका जो जीवन कहानी है, मैं थोड़ा सा पढ़ा था, ने देखा कि उन्होंने जब भारत में आया कितना कठिनाई उनका था जब ट्रैवल उन्होंने किया था। फिर भी देखिए, ये है वैष्णव लोग का आपका गुण, फिर भी वो हाल नहीं था। हम लोग का थोड़ा सा कठिनाई होने से ही बस छोड़ दो, इतना कठिनाई क्यों, मतलब कृष्ण भगवान युक्त हुआ होना मतलब क्या है, मतलब सब समय आनंद रहेगा, ये दुख कष्ट नहीं आएगा। लेकिन बहुत से लोग का क्या रहता है कि वो कष्ट सहन करते हैं और ठीक आगे बढ़ते हैं। तो महाराज भी इधर आया, बहुत सारे ट्रैवलिंग किया, फिर उनका जो है ये बोलता कि जब फिर आपस गया, उनका जो पितामह था बहुत ही माने महाराज के लिए चिंतन था बहुत, क्योंकि नहीं बोल के नहीं आया। जब गया बहुत बार चिट्ठी लिखा, लेटर, लेकिन पूर्वत महाराज वहां बताया कि जो महत् काज है, जो महत् कर्म, सब कुछ छोड़ के महत् कर्म कर सकता है। इसमें बताया जो महाप्रभु वृद्ध माता को छोड़ के, उनका जो पत्नी उनको छोड़ के वो महत् काज करने के लिए संन्यास ले लिया। तो महाराज जी बताए इसे ही महाराज ठीक है। फिर महाराज लिखा, ठीक है आप लोग बहुत चिंता कीजिए, ठीक भगवान कृपा करेंगे, आप लोग भगवान आप लोग को सहन करने को देंगे। फिर महाराज पिता माता को इतना श्रद्धा करते हैं, इसलिए मैं ये बोलते कि देखिए वैष्णव लोग माता पिता को इतना ख्याल रखते हैं, बोलते कि माता पिता यदि आशीर्वाद करे तो हम लोग का कृपा मिलेगा। कि माता पिता को जो असम्मान करते हैं उन लोग भगवान में खुश नहीं होते हैं, इसलिए माता पिता को चाहिए। ऐसे ही महाराज वो माता पिता के इतना वो सम्मान, इतना श्रद्धा करते हैं, इसलिए भी माता पिता भी महाराज के लिए इतना सोचते हैं। ये भी एक कृपा है महाराज का। फिर भी सब छोड़ के वो पूरा एकदम संन्यास ले लिया और संसार छोड़ दी। एक उदाहरण है। और महाराज देखिए इंडिया में महाराज इतना सिंपलिसिटी, उनका पहले हम लोग महाराज का इतना जाता नहीं, लेकिन बाद में महाराज का इतना पॉपुलर हो गया इंडिया में। और महाराज का इतना जैसे यूथ, महाराज का ज्यादा यूथ का उनका पॉपुलर, जैसे चौपाटी में, पुणे में, जब हम लोग पुणे में गए थे, पहला बार में पुणे गए थे और महाराज वहां आए थे, वो उनका जो
अपना आपका प्रोग्राम साल में एक बार होते हैं। तो वहाँ गए थे तो महाराज क्या मैं पहला देखे महाराज के इतना साल का महाराज जब मैंने रूम से आ रहे हैं हम लोग सब है, हम तो नया नया भक्त है, सब लोग जब देते सबको महाराज प्रणाम प्रणाम प्रणाम, मतलब कि दुनिया की सीनियर की बहुत मस्त महाराज सब समझते नहीं, एक एक करके सबको प्रणाम प्रणाम करते जाते हैं ऐसे करते करते। इस सब के लिए कौन नहीं सकता ले भाई मैं इतना बड़ा हो गया की करूंगा महाराज के लिए सब समान है। इसलिए महाराज के आज ये पवित्र जन्मतिथि के पावन उत्सव में मैं प्रार्थना करता हूँ कि महाराज आपका जो सिंप्लिसिटी ये थोड़ा हमको भी एक बूंद दे दो, आज सब भक्तों के साथ मिलके जुलके रहे और प्रचार करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हे जो राधा स्वामी गुरु महाराज की, हे जो राधा स्वामी गुरु महाराज जन्मतिथि मामा उत्सव की, हमें गौर भक्तवृंद की पिताई गौर प्रेमानंद। इस ग्रेस नबी हो मेरे प्रभु की। इतने खूबसूरत ऑफरिंग्स सुन के हम सबका जर्नी विद इन आज हो रहा है कि नहीं? I request His Grace Father Prabhu, please share his offering with us, and I request His Grace Mohan Govind Prabhu to be ready next. नमो विष्णुपदाय कृष्ण विष्टाय गोविंदाय श्रीमते राधानाथ स्वामी नामने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज बहुत ही पुण्य दिवस है, श्रीमद राधानाथ स्वामी महाराज की शुभ आविर्भाव तिथि। तो हम देखते हैं महाराज का जो आगे का जो भक्त लोग बोल रहे थे, महाराज बहुत सिंपल है और बहुत दयनीय है। जैसे हम देखते प्रभुपाद उन्होंने जब गृहस्थ आश्रम में थे उन्होंने कोशिश कर रहे थे जैसे उनका गुरुदेव का जो मूवमेंट उनको आगे बढ़ाने के लिए, और उनका जो गुरु भाई और सन्यासी थे उनको मतलब मदद करते थे टीचिंग करने के लिए। उनका जो अर्थ था वो देकर और अरेंज भी करते थे प्रोग्राम और क्लास अरेंज करके गौरिया मठ का जो सन्यासी उनको बुलाते थे। लेकिन प्रभुपाद सामने आते नहीं। लेकिन बाद में देखते हैं प्रभुपाद का जो सिंसियरिटी ये भगवान ने रिकॉग्नाइज किया और उनको ऐसे इतना बड़ा जो संस्था उनको बनाने के लिए भगवान ने मदद किया। उसी प्रकार महाराज भी हर समय पीछे रहते थे, सब लोग आगे नहीं आते, सबको आगे बढ़ा देते। और लेकिन भगवान ने उनको आगे लीडर जैसे आगे लेकर आए। देखते हैं महाराज का जैसे उनका शुद्धता, उनका जो नम्रता, उनका नाम के प्रति जो डिटर्मिनेशन, तो ऐसे भगवान, हालांकि जो लीडर होते हैं आध्यात्मिक लीडर होना नहीं चाहते, लेकिन भगवान उनको लीडर बनाते हैं, ठीक है ना, उनको सामने उनको ये करते हैं। फिर भी महाराज इतना बड़ा मतलब महान भक्त है, फिर भी हमेशा पीछे रहते और सम्मान देते हैं। हम तो 2008 में जब पुणे कैंप में गया था वहां पर, उस समय श्रीमद जयप्रकाश सिंह गुरु महाराज उनका तबीयत खराब हो गया था। उन्होंने बोला आएंगे, आगे आ भी गया, इतना तबीयत खराब था। उसके बाद उस समय श्रीमद राधानाथ स्वामी महाराज, श्रीमद भक्ति चारू स्वामी महाराज सब लोग गए थे और महाराज को वेलकम किया। और उन्होंने ऐसे वेलकम करते जैसे लग रहा था मतलब हम लोग जैसे शिष्य लोग कैसे उनको प्रणाम करते गुरु महाराज को, महाराज भी ऐसे मतलब उनका, हालांकि उनका गुरु भाई है फिर भी उन्होंने इतना रेस्पेक्ट देते हैं सब भक्तों को। तो महाराज का एक लेक्चर में सुन रहा था,
जैसे उन्हें एक बाबा के बारे में बोल रहे थे, पहले जो इस्कॉन में आए उसका पहले एक बाबा थे, उनके बाबा के साथ मिले, उनका उम्र बोले तो 200 साल ऐसे था, लेकिन जंगल में रहते थे, तो उन्होंने उनको ट्रेनिंग दिया कैसे वहां पर जीवन यापन करना चाहिए, जंगल में कौन सा फल को खाना चाहिए, कौन सा मूल लेना चाहिए। तो वो जो बाबा थे वो जंगल में रहते थे, लेकिन वहां पर बहुत जंगली जानवर थे, लेकिन वो खाते नहीं। क्यों? नमाज बोले तो उन्होंने हमको शिक्षा दिया था, हम जंगल में जो रहना चाहते हैं, तो उस जो पशु होता है उनका साथ उनको ऐसे नहीं समझ आते हम उसे सुपीरियर है, उनसे सुपीरियर है, और उनको देखना चाहिए भगवान का जो अंश है, सभी भगवान का अंश है। तो महाराज बोला हम उनसे सीखा कैसे जंगल में रहना चाहिए, तो सबको सम्मान देना चाहिए और उनको उनसे सुपीरियर नहीं मानना चाहिए, सुपीरियर मानेंगे तो लोग खा लेंगे, ठीक है। तो महाराज बोले ऐसे शिक्षा में भगवत गीता में सीखा, भगवत गीता में ऐसे बाद में सीखा, जैसे उन्होंने श्लोक बोला विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण हस्ते सुनी वो सपा के सब में भगवान का अंश है। तो महाराज का ऐसे भाव है, सबको महाराज सम्मान रहा, अर्शन सम्मान देते। तो कलकत्ता के प्रति जैसे महाराज का विशेष एक सब करना है बोले थे राधाराम वो, हाँ हम देखते हैं महाराज जब आए थे पहली बार, वहाँ पर पोपत का जो सिंहासन था वो छोटा था, और महाराज जब पोपत को माला पहनने के लिए गया, महाराज का सिर पर लग गया, तो समय महाराज थोड़ा उनको ये हो गया, हार्ट हो गया, तो आचार्य तो थे उनको, आचार्य तो बहुत ये हो गया, महाराज को लग गया, तो पूछा आपको कुछ लग रहा क्या? बोला ये मतलब जो दर्द है तब तक नहीं जाएगा जब तक ना पोपत का नया सिंहासन आएगा। महाराज ने ऐसे बोला, तो उसके बाद आचार्य तो तुरंत ये करके अच्छा ही जो सिंहासन बनाया। तो महाराज का मतलब ऐसे बोला पोपत के लिए ऐसे क्यों इतना छोटा सा सिंहासन दिया, अच्छा से सिंहासन देना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो पोपत के लिए महाराज का अलग से सोच है। तो अब अभी देखते हैं, हालांकि महाराज सब कुछ में मतलब कलकत्ता में जैसे पोपत का बात प्लेस और उल्टा डाला सब कुछ हो रहा है, लेकिन महाराज आ नहीं पा रहे, हालांकि दूर में है। तो मैं सोचा तो महाराज ये हालांकि यहाँ पर नहीं है, लेकिन उनका मर्सी जो है कलकत्ता का प्रति है। तो हम याद आ रहे थे, आज के भी सोच रहा था, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर ने उन्होंने क्या कर रहे थे, पूरी में जाकर भगवान का नाम कर रहे थे, हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे थे, और उनका जप के प्रभाव से सारे विश्व में हरिनाम प्रचार हुआ। भक्ति विनोद ठाकुर ने पूरी धाम में जाकर हरिनाम जप किया, उनके प्रभाव से उन्होंने देखा सारे विश्व में कैसे प्रचार हुआ। तभी जैसे राधा उनको बोल रहे थे, महाराज बोल रहे थे अभी शिल प्रभुपाद का जन्मस्थान या उल्टा का ठीक से होगा तो धीरे धीरे सारी दुनिया पर प्रचार होगा। हालांकि महाराज यहाँ पर नहीं है, लेकिन महाराज पूरी धाम में जैसे उन्होंने भी भगवान का नाम कर रहे, उनका जो प्रभाव है, उनका जो आशीर्वाद है, उस आशीर्वाद से हम देख रहे हैं कलकत्ता में कैसे डेवलप हो रहा है, और ऐसे दुनिया भर भी उनका ऐसे मतलब भगवान का वाणी का प्रचार हो रहा है। तो और स्वामी कुछ है टाइम हो गया। तो एक बार मैं वहाँ के साथ थोड़ा इंटरेक्शन हुआ, ज्यादा जो पास में नहीं जा पाया, लेकिन एक बार गया था जब 2008 में हम लोग पुणे कैंप के बाद चौपाटी में गया था। तो महाराज ऊपर में चौपाटी मंदिर के ऊपर में थे, खड़ा थे, तो हम जाकर तुरंत जाकर महाराज के चरण स्पर्श कर लिया। चरण स्पर्श करके प्रणाम किया। तो महाराज ने पूछा आप जयपता महाराज के टीसे में रहते हैं? यस महाराज। तो क्योंकि महाराज को चरण कोई स्पर्श नहीं कर सकते, वहां पर कोई स्पर्श नहीं करते, तो महाराज समझ गए ये मतलब यहाँ का नहीं है, ये तो मतलब कॉन्सेप्ट जो होता है मायापुर ऐसे उधर का ही होगा, ठीक है ना। तो महाराज तुरंत पूछा, तो सब लोग हंस रहे थे, पास में जो लोग खड़ा थे, महाराज को हम चरण स्पर्श करके कोई लोग ऐसे स्पर्श नहीं कर सकते। तो ऐसे महाराज के साथ रिलेशन हुआ। और महाराज का जैसे देखते महाराज बोलते रहे, एक बार मीटिंग हुआ था कलकत्ता में ब्रह्मचारी को लेकर, तो सब लोग बहुत उत्साहित थे, महाराज कुछ बोलेंगे कलकत्ता में क्या क्या करना चाहिए, कैसे कैसे होना चाहिए, टीचिंग के बारे में कुछ बोलेंगे। तो महाराज ने कहा
ये चीज हमको ये लेना चाहिए। मीटिंग का जो सार वस्तु है ये है, क्या है? तीनालोकी सुनी चेना तोरो विषय सुना हमारे न मार देना कितना नहीं सुना। ये हमारा मतलब मीटिंग का एजेंडा, मतलब ये हमको करना है, ये हमारा गोल है। ऐसे नहीं कुछ मंदिर बनाना, ऐसे उन्होंने बोला ये श्लोक को हमको अपनाना है। तो उस समय एक लीडर थे कलकत्ता के, उन्होंने महाराज को बोले, एक और दूसरे लीडर को बोले थे, महाराज ये लीडर ने मुझे हमको मदद करे अभी प्रचार करने में। तो महाराज ने उनको ये किया, उनको तो देखा, उसके बाद बोला उन्होंने आपको मदद करे ना, आप उनको मदद कर रहे, मतलब आप उनको सेवा कर रहे, ऐसे नहीं आपको सेवा कर रहे। तो हर समय महाराज का ऐसे भाव होता है, दूसरे वैष्णव को सेवा करना, सबको आगे बढ़ाना, खुद पीछे रहे। तो महाराज का अंदर ऐसे मतलब वैष्णव का जो सद गुणावली महाराज का अंदर है। तो आज के शुभ दिन में महाराज का चरण में मैं प्रार्थना करता हूँ, जैसे उन्होंने थोड़ा कृपा करे मुझ पर, और एक उपाध का जो मूवमेंट में इसमें सेवा कर पाए, और महाराज के चरण में, चरण छाया में हम रह पाए, कलकत्ता में प्रचार करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। His Grace Palan Partha Prabhu ki Jai. We are very fortunate that His Grace Murlidhar Prabhu and Radharani Mataji are on their way and are coming here. So I request everyone to give just 5 minutes of offering so that we get opportunity to hear from them as well. We now request His Grace Mohan Govind Prabhu to please give his offering. And I request Her Grace Leela Bihari Mataji to be ready next. नमो विष्णुपदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते राधानाथ स्वामी नमिने। नमो विष्णुपदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य शास्त्रार्थ। हरे कृष्णा। तो आज के इस शुभ दिवस पर हिज होलिनेस राधानाथ स्वामी महाराज के 72वें 72 अपीयरेंस डे पे हम महाराज की कुछ क्वालिटीज हैं जिससे हमारा प्यूरिफिकेशन हो सकता है उनका, और उनके लेक्चर से कुछ क्वालिटीज है उसका थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। मेरा ऐसा सौभाग्य तो नहीं कि मेरे आनंद मोहन प्रभु और राधामोहन प्रभु की जैसी भगवान महाराज के साथ लीलाएं हुई, वैसा कुछ पर्सनल इंटरेक्शन तो नहीं था बहुत ज्यादा, लेकिन उनके लेक्चर से काफी कुछ सीखा है महाराज की गुड क्वालिटीज। तो भागवतम में आता है, भागवत के 11वें स्कंद में आता है कि इस संसार में कभी भौतिक व्यक्ति की ना तो प्रशंसा करनी चाहिए, नहीं क्रिटिसाइज, नाइदर प्रेज नॉर अप्रिशिएशन, बिकॉज उससे किसी को कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है, वो सब टेम्परेरी रहता है। लेकिन जब वैष्णव की क्वालिटीज की हम गुणगान करते हैं तो हम वास्तव में भगवान का गुणगान कर रहे हैं, क्योंकि वैष्णव की क्वालिटीज जो है वो भगवान को प्रसन्न करने वाली होती है। तो जब हम उस क्वालिटीज का गुणगान करते हैं और जब सब लोग सुनते हैं तो एक तरीके से भी प्रीचिंग है, जैसे कि सब लोग उस क्वालिटीज को पाने का प्रयास करते हैं और इस तरीके से भगवान को प्रसन्न करते हैं। इसमें जैसे पालक पार्षद में इससे पहले दूसरे भक्तों ने बताया कि महाराज की सिंप्लिसिटी है और उनका जो लेक्चर है उसमें डेप्थ है, गहराई बहुत, हर एक जो उनका शब्द है वो बहुत गहराई और उनकी भगवान के प्रति जो भक्ति के प्रति जो सिंसियरिटी है उसको बताता है। महाराज एक लेक्चर में बताते हैं कि जिसमें इन्होंने गुरु का मीनिंग क्या और गुरु क्या कार्य करते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो एक एग्जांपल दिया है, एग्जांपल देते हैं लेक्चर में कि
जैसे पानी की बूंद, जब रेन ड्रॉप जो है, वर्षा की बूंद ऊपर से गिरती है, तो वो वर्षा की बूंद ओरिजिनली बहुत प्योर रहती है, बहुत शुद्ध रहती है। लेकिन जब वो नीचे आती है तो धूल के साथ, डर्ट के साथ मिलके वो मड बन जाता है, कीचड़ बन जाता है या गंदा हो जाता है। लेकिन उसको जब वो फिल्टर करते हैं, जैसे आजकल नए वाटर प्यूरिफायर निकले, गटर के पानी को भी एकदम प्यूरिफाई कर देते हैं, तो वो उसको करते हैं तो एकदम फिर से प्योर हो जाता है। तो गुरु का काम ये है कि जब ये सोल आध्यात्मिक जगत से मटेरियल जगत में आता है, तो मटेरियल जगत में के कांटेक्ट में आने पे कंटामिनेट हो जाता है। तो गुरु का काम है उसको फिल्टरिंग में हेल्प करना, जिससे क्या है कि सोल फिर से अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाए। बिकॉज सोल का, आत्मा का टेंडेंसी है भगवान को प्रेम करना, लेकिन वो मटेरियल जगत में आके जब गिरता है तो कंटामिनेट हो जाता है, भगवान को छोड़ के बाकी सबसे प्रेम करने लगता है। लेकिन फिर गुरु उसमें हेल्प करते हैं, उसको फिल्टरिंग करने में हेल्प करते हैं, जिससे क्या है वो अपनी ओरिजिनल चेतना में आ जाए, मूल चेतना में फिर से भगवान को प्रेम करने लगे। ये गुरु का काम बताते हैं। दूसरा गुरु का जो उसी लेक्चर में डिस्क्राइब करते, दूसरा गुरु का नाम कि गुरु जो है भगवान के बहुत करीब रहते हैं। हालांकि भगवान हमारे अंदर भी परमात्मा है, भगवान के करीब है, लेकिन हमें पता नहीं है, तो इसलिए हमें पास रहते हुए बहुत दूर रहते हैं। तो गुरु क्या है कि भगवान की आवाज को सुन सकता है, क्योंकि वो पास में है, उनको जल्दी सुनाई देगा। लेकिन बाकी जो मटेरियली कंटामिनेटेड, जो भौतिक जगत में दूषित हो चुके हैं, वो आत्मा सुनने में बहुत टाइम लगता है, समझ नहीं पाता। तो गुरु क्या करता है कि उनको अपने शिक्षा के माध्यम से उनको उसमें जो लोग परंपरा में भगवान के पास हैं, उन सब की बात सुनते 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 वो उन्होंने बात सुनी, वो अपने डिसाइपल को भी, शिष्य को भी सुना देता है, जिससे क्या है कि वो भी भगवान के पास में चले जाए, वो भी उस परंपरा से जुड़ जाए, और आगे जो आने वाली जनरेशन है उसको भी वो सुना सके, सबको भगवान के क्लोज ले जा सके। तो इस तरह से उनके महाराज के लेक्चर में इस तरीके से काफी सारी बहुत बारीकी से चीजें सीखने की है, और हर चीज का महत्व बताते हैं, और प्रशंसा को किस तरह से लेना चाहिए। व्यास पूजा के दिन गुरु महाराज का बहुत ग्लोरिफिकेशन होता है, तो उनको ये समझ जाना चाहिए कि ग्लोरिफिकेशन जो है, जिनका भी ग्लोरिफिकेशन हो रहा है, कि ये मेरे लिए नहीं है, ये जिन लोगों ने मुझे भक्ति में आने में सहायता की पूरी परंपरा में, वो सब लोगों को क्रेडिट जाता है। अगर वो मैं परंपरा में नहीं होता तो मेरा ग्लोरिफिकेशन कैसे होता? मैं भी एक सामान्य आदमी जैसे सड़क पे घूमता, तो कोई मुझे जानता नहीं। तो इस तरीके से ग्लोरिफिकेशन को, जो व्यास पूजा के दिन स्पेशली होता है, ग्लोरिफिकेशन उसको लेना चाहिए। इस तरह से काफी सारी शिक्षा है, बहुत सारे महाराज के लेक्चर भी हैं, और सब में गूढ़ता है, गहराई है। उनको सुनने से हमें काफी मोटिवेशन मिलता है, भक्ति में स्थिर रहने की प्रेरणा मिलती है। तो आज के इस ऑस्पिशियस ओकेजन पे, इस शुभ अवसर पर, मैं गुरु महाराज से निवेदन करता हूं कि वो अपनी कृपा का कुछ बिंदु हम पे भी छिड़कते रहें, कृपा देते रहें, जिससे हम भी भक्ति में अपने आप को स्थिर बने, और उनके गुरु की जो सेवा है उसमें हम भी भाग ले सकें। हरे कृष्णा। राधानाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। राधानाथ स्वामी गुरु महाराज व्यास पूजा महामहोत्सव की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी वैष्णव गणों की हरे कृष्ण। His Grace मोहन गोविंद प्रभु की जय। आज जितने भी क्वालिटीज जो महाराज इंसिस्ट करते हैं डिवोटी में होने चाहिए, मेरा बहुत सौभाग्य है कि मैं कलकत्ता मंदिर से जुड़ा हुआ हूँ, कि जितने भी मेरे सीनियर्स हैं उन सब में मैंने ये क्वालिटीज बहुत देखी हैं। तो इसी थॉट के साथ आई रिक्वेस्ट हर ग्रेस लीला विहारी माता जी टू प्लीज शेयर हर ऑफरिंग विद अस, एंड आई रिक्वेस्ट हिज ग्रेस अदोक्ष माधव प्रभु टू बी रेडी विद इज द नेक्स्ट स्पीकर। थैंक यू। Hare Krishna.
Very happy Krishna conscious birthday to my beloved Guru Maharaj. Actually, मेरा गुरु महाराज से इतना पर्सनली इंटरेक्शन या उनका इतना सेवा फिजिकली नहीं, आई एम वेरी अनफॉर्चुनेट मुझे प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन आई एम वेरी थैंकफुल टू द डिवोटीज ऑफ कोलकाता, हिज ग्रेस आनंद मोहन प्रभु जी, हिज ग्रेस आचार्य रत्न प्रभु जी, जिनके थ्रू मुझे जो भी लिटिल सेवा मिल सका गुरु महाराज का मैं कर पाई. आई एम वेरी थैंकफुल टू बोथ ऑफ देम. एक्चुअली सर्विस देते थे ना आनंद मोहन प्रभु जी, हमेशा फीडबैक में देते थे, माता जी आपका मूंग का दाल जो है महाराज को बहुत पसंद आया. उन्होंने ट्वाइस लिया, तो उनका वही फीडबैक सुन के इतना सेटिस्फेक्शन मिलता था कि एटलीस्ट व्हाटएवर लिटिल सेवा हम लोग कर पा रहे हैं. और थ्रू महाराज यात्रा जो हम लोगों ने उनके लेक्चर्स सुने और सीनियर डिवोटी से जो कुछ भी सुना, तो महाराज का पता चला कि महाराज कितने प्रसन्न होते हैं जब उनके भक्त में दो क्वालिटीज में महाराज बोलते थे, एक हम्बलनेस और एक सह भक्तों के साथ आप कैसे यूनाइट होके चलते हैं. तो आई एम वेरी सॉरी महाराज की वो हमेशा मैं प्रयास करती हूँ लेकिन फेल हो जाती हूँ. तो इस ऑस्पिशियस डे पे मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि वो बार बार मैं फेल ना हो पाऊं और अच्छे से सर्व कर पाऊं भक्तों को, और थोड़ा हम्बलनेस का एटीट्यूड ला पाऊं. इसके लिए आप मुझे आशीर्वाद दीजिए. और एक छोटा सा इंसिडेंट मैं बताना चाहूंगी कि 2017 में मेरा एक बहुत ही मेजर ऑपरेशन हुआ था. बहुत पैथेटिक सिचुएशन में थी मैं उस समय. बेलव्यू में मुझे हिज ग्रेस आचार्य रत्न प्रभु जी मिलने आए थे. तो जैसे ही वो आए मेरे रूम में, तो मेरे मन से बस यही प्रार्थना उनसे निकली. मैंने यही बोला उनको कि किसी तरीके मेरा ब्रह्म दीक्षा का अरेंजमेंट करवा दीजिए. बस एक बार जैसे ही उनको देखा मेरे मुंह से ये निकला, तो he took it very seriously. और उसी समय महाराज भी मायापुर में थे, तो महाराज के साथ शायद उन्होंने मीटिंग किया होगा, या उस समय महाराज का भी था प्लान था ऐसा कि वो आएंगे और कोलकाता वासियों को, उसमें बहुत लोग थे जिनका ब्राह्मण दीक्षा होना था. तो लेकिन डॉक्टर से कैसे अपॉइंटमेंट है, क्योंकि उस समय मुझे 13 to 14 डेज ही हुए थे ऑपरेशन के. तो डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली मना किया था कि आपको ना नीचे बैठना है ना आपको सीढ़ियां चढ़ना है. तो हम लोगों के लिए सिचुएशन था कि हम लोग कैसे सीढ़ी चढ़ेंगे, क्या करेंगे. लेकिन भक्तों के सहयोग से इतना अच्छा अरेंजमेंट हुआ कि धीरे धीरे मुझे कॉलर था इतना बड़ा और सीढ़ियां भी चढ़ गई, सब चढ़ गई. महाराज आए, महाराज प्रभुपाद रूम में आए और सबने बोला कि सबसे पहले माता जी को फ्री कर देंगे. तो आई वेंट इनसाइड और महाराज सामने थे और महाराज ने मंत्र दिया. और मंत्र देने के तुरंत बाद जैसे मैं खड़ी हुई चेयर से, तो मैं गिर गई. अब मैं गिर गई तो वहां पे महाराज के असिस्टेंट भी थे, तो उनको एक्चुअली बताया हुआ था कि माता जी का थोड़ा ध्यान रखना है कि गिरे नहीं. और मैं गिर गई और महाराज ऐसे टर्न किए और बोले व्हाट हैपेंड. और फिर महाराज बैठ गए, मैं चली गई, मुझे लेके गए, बाहर बैठाया. देन एडवांस महाराज के असिस्टेंट आके मुझे बोले कि महाराज ने बोला है डोंट वरी, यू विल बी रिकवर वेरी सून. मैंने राधा गोविंद से प्रे किया है कि आप बहुत जल्दी ठीक हो जाए. तो वो ब्लेसिंग से उसके बाद मुझे कभी भी कुछ नहीं हुआ. इतना अच्छा ब्लेसिंग्स दिया मुझे गुरु महाराज ने कि उसके बाद आई एम वेरी फिट एंड फाइन. और शायद इसी वजह से कि महाराज मुझसे सेवा लेना चाहते हैं, और कभी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई. बस वही मंथ में एक बार ही गिरी और उसके बाद मुझे कुछ नहीं हुआ. डॉक्टर को भी नहीं बताया हम लोगों ने लेकिन वो एक बहुत बड़ी कृपा थी मेरे ऊपर गुरु महाराज की. तो थैंक यू एवरीथिंग फॉर गुरु महाराज. आपने बहुत कुछ दिया है, बहुत ब्लेसिंग्स है आपकी, लेकिन आई एम वेरी सॉरी कि मैं अच्छे से सर्व नहीं कर पाती हूँ. तो आज के दिन मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि प्लीज 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 महाराज मुझे ये ब्लेसिंग्स दीजिए कि मैं और अच्छे से सेवा कर पाऊँ और ये जो हम्बल एटीट्यूड है इसको थोड़ा ग्रहण कर पाऊँ. हरे कृष्ण.
Her Grace Leela Bihani Mata Ji ki. We now request His Grace Adoksh Madhav Prabhu to please share his experiences with us. And I request His Grace Anand Mohan Prabhu to be ready next. हरे कृष्णा। आज मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे ये होलिनेस स्वामी महाराज के लिए दो शब्द बोलने का अवसर प्रदान हुआ है। सभी भक्तों ने, मैं सबका तो नहीं सुन पाया, लेकिन बहुत अच्छा लगा कि महाराज के बारे में, कि देखिए भागवतम में भगवान सर्वज्ञ कहते हैं कि मैं कोई धाम में नहीं रहता हूँ, जहाँ मेरे प्रिय भक्त होते हैं मैं वहीं रहता हूँ, उनके हृदय में रहता हूँ। और वास्तव में तीर्थ होते हैं, जहाँ जहाँ जाते हैं वही तीर्थ स्थान बन जाता है। महाराज कभी कभी मेरे को आनंद प्रभु बोलते हैं, प्रभु बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई करते हैं। तो मैंने कहा कि प्रभु देखिए, जो भक्त होते हैं, भगवान के जो शिष्य होते हैं, जो परंपरा से जुड़े होते हैं, उनका ग्लोरिफिकेशन करने से हम अपने स्वार्थ, हमारा ग्लोरिफिकेशन होता है। उनका ग्लोरिफिकेशन की बात है, उनको केवल याद करने मात्र से क्या होता है, हमारा ग्लोरिफिकेशन होता है। तो महाराज में इतने गुण हैं, और स्पेशली मेरा पर्सनल उनसे ज्यादा इतना इंटरेक्शन नहीं हुआ, लेकिन जैसे इस मोहन गोविंद प्रभु ने बताया, उनके लेक्चर्स को जब सुनते हैं और उनके देखते हैं, उनको जब वो अपनी आंखों से भक्तों पर कृपा की जो वर्षा बरसाते हैं, वो अद्वितीय है। उसको देखते हैं, उनको सुनने से हमारे चरित्र में, हमें हरियार में परिवर्तन है। मैं एक छोटी सी इंसिडेंट जस्ट आई वुड लाइक टू शेयर विद ऑल। आई डू नॉट, आई थिंक कि सच बताऊं तो मैं ISKCON में हूं और आज यहाँ हूं ओनली बिकॉज ऑफ राधानाथ स्वामी महाराज। Just, before joining ISKCON, I was in business and I used to travel abroad to China and other cities. And our system was like this: I flew to China, and my younger brother Rajesh is staying in Mumbai. वो भी हमेशा he will fly to Mumbai. And हमारा सिस्टम था कि महीने में एक बार मैं फ्लाई करता था कलकत्ता से, मेरा छोटा भाई राजेश बॉम्बे से। ये करीब 3-4 साल तक चलता रहा। And I think in 2004, China we went together, like as usual. From that particular year, my younger brother requested me, भैया थोड़ा सा accounts देखना है, why don't you come to Bombay, stay for 1 day and then next you can take next day flight. मेरे भी मन में आया, ठीक है। Instead of coming back to Calcutta, I went to Bombay. The moment I landed, तो एक फोन आता है छोटे भाई के पास में कि राजेश प्लीज कम टुडे देयर इज स्पेशल प्रोग्राम। तो राजेश ने मेरे कहा, भैया आई एम सॉरी यू कैन नॉट टेक दिस इवनिंग फ्लाइट, यू हैव टू टेक टुमारोज फ्लाइट। क्या हुआ वो बताया नहीं, बोले चलो भैया आप भी चलो। मैंने कहा नहीं, मेरे को थोड़ा बहुत काम है, इधर कर लूँ। बोले भैया एक बार चलो। उस दिन बिरला हाउस में प्रोग्राम था, बिरला हाउस में प्रोग्राम था। तो मेरे को राजेश छोटे भाई के संग में चला गया। जाने के बाद मैंने देखा बिरला हाउस में, आई वाज कनेक्टेड विद बिरला, आई हैड बीन टू दैट प्लेस सो मेनी टाइम्स। जब मैं वहां पे जा तो मैं गया, तो वहां पर मेरे को छोटे भाई ने मिलवाया, ये महेश्वरी साहब हैं, तो इन्होंने मेरे को फोन किया, तो इसलिए मैं आया, भैया सॉरी थोड़ा सा आधा घंटा टाइम दो। तो उन्होंने महेश्वरी साहब से मेरे को मिलाया, तो मैं बोला ठीक है बहुत। उसके बाद में बोला इनका नाम, स्पिरिचुअल नाम यू नो क्या है, महाप्रभु है। महाप्रभु से मिलवाया। महाप्रभु ने मेरे को देखा, ओ यू आर द एल्डर ब्रदर ब्राइस सर, सो यू आर वेलकम।
और उसके बाद में मैं जाके आगे बैठ गया तो देखा, बोला कि आज एक लेक्चर है तो प्रभु जी का, तो उस समय टू बी वेरी फ्रैंक विद फोल्डेड आई टेंडर अपॉलॉजी, महाराज इस तरह के मैं नहीं बोलता था, वो ठीक है साधु है। तो मैं बोला राजेश मेरे को आई विल बी लेट, देखो मतलब भैया बैठ गया करके उन्होंने लेक्चर दिया, और जो सुंदर उन्होंने लेक्चर दिया उसके बाद में जो भजन किया, तो जस्ट आई फॉट एवरीथिंग कि मैं बहुत अच्छा। जैसे ही लेक्चर खत्म होता है महाप्रभु मेरे को लेते हैं एंड ही टुक मी टू राधानाथ स्वामी महाराज के पास ले गया। महाराज ने मेरे को देखा, आई डू नॉट नो, जस्ट ही इम्प्रेस्ड मी टू हिज चेस्ट, और इतना किया मैं जस्ट आई कैन नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स दैट स्पिरिचुअल फीलिंग व्हिच आई रियलाइज। उसके बाद में वो महाप्रभु को बुला के बोलते हैं कम हियर, ही इज आवर स्पेशल गेस्ट, टेक हिज स्पेशल। तो महाराज ने कहा, फिर भी मैं चला आया, मैं ठीक है बहुत अच्छा लगा। ठीक उसके 3 दिन बाद या हो सकता है 4 दिन बाद, जस्ट आई वाज अबाउट टू लीव फॉर माय ऑफिस, उसके बाद तुरंत मेरे पास फोन एक आता है, आई एम गौरांगो दास। बोले कौन गौरांगो का? मैं भी इमीडिएटली थोड़े दिन बाद में बोला प्रभु आई हैव टू लीव फॉर, कैन यू स्पेयर, देखिए भक्त कितने हम्बल होते हैं, कैन यू गिव मी 2 मिनट्स टाइम? ओके, तुरंत वो घर के बाहर ही खड़े थे, ऑलमोस्ट इट वाज वेरी नियर टू माय हाउस। अंदर आ गए, आके बैठे, तो बैठा, मैंने कहा मैं घड़ी देख रहा हूँ, मेरे को जाना है जाना, मेंटलिटी बने देखे बदे जीव का। तुरंत बाद मैंने कहा आप चाय कॉफी क्या लेंगे, बिकॉज दैट वाज द नॉर्मल। जैसे ही मैं अंदर आते हैं, मेरी इतना बड़ा सिर दुखा है, साथ में एक हमारे जो बहुत सुंदर दिव्य आनंद मोहन प्रभु जी और वल्लभ प्रभु साथ में, बीच में गौरांग, आई कैन नॉट फॉरगेट दैट डे। और उस दिन के बाद से तब तक मैंने कलकत्ता टेम्पल भी नहीं देखा था, और उस दिन के बाद से इतनी बड़ी कृपा हुई, गौरांग प्रभु, आनंद मोहन प्रभु और वल्लभ, उन्होंने मेरे को पूरा फिर कलकत्ता मंदिर से जोड़ा, और सदैव मेरे पीछे लगे रहे जब तक कि मैं भक्ति में। इतनी इनकी बड़ी कृपा। देखिए राधानाथ कितने हम्बल होते हैं, जैसे उनकी कृपा से उन्होंने महाप्रभु को बुलाया, महाप्रभु ने गौरांग प्रभु को बुलाया, और गौरांग प्रभु आनंद बुलाया। तो ये होती है भक्तों की कृपा, परम वैष्णव आचार्य की कृपा। हरे कृष्णा। तो इसलिए मैं जानता हूँ कि संघ महाराज प्रभु परम वैष्णव की कृपा इतनी महान होती है, जो से मैं इतना माने भक्ति जी भौतिकता लेता है, जिन्होंने मुझे भक्ति में दिया। हरे कृष्णा। His Grace Adhoksha Madhav Prabhu ki jai. We now request His Grace Anand Mohan Prabhu to please share the nectar with us. I remember one small incident when Maharaj was giving Bhagavatam class and His Grace Anand Mohan Prabhu was sitting in the audience, and Maharaj mentioned in the class that whenever His Grace Anand Mohan Prabhu sees a green bangan, he thinks, how will I cook this for Maharaj? So I was just wanting to share this moment with all of you. Thank you. Mayam Vishnu Padaya Krishna Krishna Bhutale Srimati Radhanath Swami Namini Panchakalpataru Pustakripa Sindhu Prevacha Pitanand Bhavanitya Vishnu Namaha Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Prabhu Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. So English will be okay. So a very auspicious day today, and I am feeling Maharaj's presence here by hearing his glories, and every single devotee has so much love for Maharaj that can be understood in the way that they are speaking and sharing their heart. So it's an amazing experience. Krishna also says, Aham Bhakto Paradhino, I'm controlled by my devotees. So yes, our spiritual personality, a spiritual leader has so many wonderful qualities, and is unlimited. We can't
measure them by our limited capacity. However, depending on our own interest and nature, they give the services. That was been a very great blessing that Prabhupada gave to his disciples. And we have so many wonderful, great souls like His Holiness, Sri Radhanath Swami Maharaj, who is having that same quality. So today I am going to tell you not anything in regard of whatever I have experienced with him. I am going to tell you what I appreciate, and I really feel that we can learn this thing, this specific attitude and consciousness of His Holiness Sri Radhanath Swami Maharaj. I have seen Maharaj that he is always very keen to associate with his God brothers and God sisters. And it does not limit him towards ISKCON. I have seen Bhakti Sundar Govinda Maharaj, I have seen Bodhayan Maharaj, and many other Vaishnavas in different other sects of Vaishnavism, like Udupi, Krishna servant, Pejawar Swami Maharaj, and recent Maharaj also who is there. And then Sri Sampradaya, so many wonderful Vaishnavas are having so much deep and high esteem, towards Sri Radhanath Swami Maharaj. I remember when Sri Jayapataka Swami Maharaj, Guru Maharaj was sick, Maharaj is the first person who said that, you come to Bhaktivedanta, hospital. And in the initial days of Guru Maharaj, Sri Jayapataka Swami Guru Maharaj, health issues, Maharaj was always there with him. And I know that I think, थोड़ा सा इसका धीरे कर सकते हैं क्या? तो अच्छा रहेगा. थोड़ा भम हो रहा है ना? ठीक. अगर आप लोग खुश हैं तो कोई बात नहीं. मैं तो आपके लिए बोल रहा हूँ महाराज. So मैंने देखा कि श्री जयप्रकाश स्वामी गुरु महाराज first after his that stroke, the first program he did, it was in Pune Yatra. And certain things, we can't forget actually. And one of the things that is there in my heart is, I think more than 5,000 devotees were waiting for Srila Jayapataka Maharaj getting a glance. And in that courtyard, everybody was waiting and chanting. And suddenly Radhanath Maharaj announces that here comes nobody can stop him, the person, and that is Maharaj. And when the curtain opens, and everybody I saw, including me, everybody was in tears to see Srila Jayapataka Maharaj in a wheelchair. Everybody was crying, and all his godbrothers were standing there, embracing him. I think they were there as well. It was such a memorial, spiritual, divine, thought, that everybody was there. I have personally seen that Bhakti Charu Maharaj, when he opened the new center, when the temple was not yet opened, and we were there, myself and Vallabh Chaitanya Prabhu, and I saw that Radhanath Maharaj came just to be with him. And Radhanath Maharaj, I saw that the same Vyasasan, it is so small. Bhakti Charu Maharaj was so happy to receive him. They were holding each other's hand as if, very good friends have come, and after a long time they are meeting. And they were squeezing in one asana. And then there was a Guru Puja, made for them. And both of them were sitting in the same Vyasasana. When I first time went to Chowpatty, the first time I saw a big Vyasasana like that. When you have a consciousness of, a big heart. So we see that the reciprocation and the effect. So we saw, how many of you seen the Chowpatty's Vyasasana? You know why he made that? The idea was Maharaj's idea. Sometimes, so many of his godbrothers and god sisters will sit,
and he will sit in the corner and he will have this, glorification of Krishna. I have never seen that in any other temple. So that is the uniqueness of equals association. I can't forget the days and the videos sometimes I see that Bhakti Tirtha Maharaj in the last 1 month, I think more than 1 month, he just wanted to be with Radhanath Swami Maharaj. Now here he is a GBC, he is a guru, he is a leader, he is so many things, responsibilities. But he keeps time for his nourishment towards, his God brothers and God sisters. Equal association. Many times we speak, but after some time, what happens when you grow, you become a big person. And then you think that why to hear from others? But Maharaj is not like that. Maharaj is so keen to get association of his God brothers. Now Niranjan Maharaj, he is very close, then Gurujan Prabhu I have seen also. And so many other personalities I have personally seen. And then Gurudev, I have personally seen that Gurudev was so fond of Srila Radhanath Swami Maharaj. Gurudev said that, "Hey, your chappals are very nice, the sadhu chappals. I want that, something like that for me." So he offered that. And hours they will talk, they will laugh, they will giggle, and they will speak about something. And we used to serve them and we used to see that how much they are relishing their association of each other, which I feel is a very protective shield in a devotee's life whenever you grow. And unless and until we have this equal association, there is a high chance of falling down from the pure consciousness of Krishna consciousness, because you will be alone. And Maharaj is very, very fond of his God brothers and God sisters. In the yatras I have seen, he will call his God brothers and God sisters and they will speak. And at the last he will speak. So I really appreciate that. Gurudev, I heard from Maharaj only. One time there was a GBC meeting in US. Maharaj was telling me while taking prasad. And Maharaj said that, I showed a picture actually, that in Hungary, Maharaj and Gurudev was dancing together. I think 2001 or 2002 Janmashtami, I don't remember. 2004 Janmashtami. Huh? Sorry. No, 2004 nahi ho sakta. Gurudev was not there. Yeah, 2001 or 2000 hoga. And Gurudev was there in Hungary. And then Gurudev always wanted that Radhanath Maharaj should dance. So in GBC meeting of that year, so what happened actually, they had a GBC meeting, and after GBC meeting they had a Nagar Sankirtan. And they had a wonderful Nagar Sankirtan with all GBCs dancing in the streets. And then next day, Gurudev will make it sure that Radhanath Maharaj stays with him in the same room. उधर रूम का कभी भी समस्या था, एक साथ सबको एक मिलता नहीं था. So we were staying together. So Gurudev was sitting in the bed and Maharaj was sitting in a couch. So Gurudev said that they were talking about Mahaprabhu, they were talking about all the other things. So suddenly Gurudev said that, do you know how Mahaprabhu used to dance? Then Radhanath Maharaj said, have you seen that? Like they were joking with each other. Yes, I have seen that. I have experienced that. And then, Gurudev threw a newspaper towards Radhanath Swami Maharaj, and then it went in front of him. And there was a picture of Radhanath Maharaj doing like this. It came in the Times newspaper that the Hare Krishnas were in the street giving mercy of Gauranga. And Maharaj was dancing like this. And then Gurudev said that this is the experience I get. I know that Mahaprabhu used to dance like this. So it was, Maharaj is very, very kind personality in regard of his association of equals. And I remember one time there were so many devotees, so many Maharajas came for the GVC meeting, and the one night they stayed in our temple. I think Rasheshwar Prabhu and Vallabhprata Prabhu and all of you remember. And then Gopal Krishna Maharaj was there, Loknath Maharaj was there, Jayapataka Maharaj was there. And what happened actually, Jayapataka Maharaj wanted, they were all served in the library of ours. So Jayapataka Maharaj
they were all joking with each other. They were taking prasad together. So Jayapataka Maharaj wanted some remnants from Radhanath Swami Maharaj's plate. So as he was telling him, Maharaj said that, give me some of your remnants. So Maharaj said, how can I do that? They were all making fun of each other and we were enjoying. And then I think Raseshwar Prabhu made, that moa. Raseshwar Prabhu makes really nice moa. You should try, with a lot of love and affection. So when he offered it to Jayapataka Maharaj and all the others, and Radhanath Maharaj thought it's something like Rasgulla. And he smashed it and it broke. It is a dry thing and it fell upon all the godbrothers of him. Then Jayapataka Maharaj said that I only wanted a little bit and you have given an abundance of malevolence of yours. One time in Dayaram Prabhu's place, when they were staying in the Vyas area, there Mataji called us that Jananivas Rup Pankajang Rup and Radhanath Maharaj I have invited for prasad. So they have come. Prabhu is not there for service. Can you both come, yourself and Balachita Prabhu, to serve the renounced people? So we said, why not? So we went for Calcutta actually to serve them prasad. So we went and we were taking, we were serving. And after everything is done, all these things, Maharaj was going. And suddenly Maharaj saw Jananivas Prabhu's shoes. And then Maharaj, took those shoes, put it in his head, and then put it in his chest and said, I pray one day these slippers becomes my sleeping pillows. I still remember that. And then Jananivas Prabhu was feeling, there's a mitti mein mil jaye. Both the brothers were like so much, embarrassed. Yes, embarrassed. So Maharaj is having very unique relationship with his God brothers and God sisters. I know you can name anyone. Maharaj is having so much desire to serve all of them. I remember when I was doing a PDC course in our words, in today's words. So I was there, Prabhus were there, because Gurudev asked us to take training under Radhanath Swami Maharaj. So we all went. That was the last instruction of Gurudev. I am not physically present and I am not giving you. So you go to Maharaj and Maharaj will train you. So we went. That was the last order towards us from Gurudev. Some other we went. And by Krishna's mercy, Maharaj engaged me and Balachandran Prabhu also, but I was sent to the hospital of Bhaktivedanta Hospital, and there I saw so many great souls. Prahladananda Swami Maharaj, then Bhaktivedanta Maharaj. I was personal servant for 15 days, and I was seeing that how kind Maharaj was to allowing me. I was a new ghar se chala gaya tha. I was not so much trained, but then I saw that so many Vaishnavas and Vaishnavis are coming into the hospital for treatment, and Maharaj personally comes and meets them. Maharaj will make it sure that whenever they are in the hospital, and if Maharaj is in the town, they will come and he will meet him. Many times in the hospital only they will take prasad together. So this is the thing that I really touched my heart. Especially Bhaktivedanta Maharaj time when Maharaj was having cancer. If you know, I don't know how many of you remember, Radhanath Maharaj was holding his hand, and there was a Giriraj Shila in there, both of their hands. It's so emotional. But sometimes I feel we will preach, we will bring people, but we miss the sweetness of Sangha. We miss the sweetness of appreciating each other's association. We miss the adda. Spiritual adda, we don't talk nowadays. Every time we meet, it is meeting of management only, or some programs that is upcoming. But then Maharaj makes it sure, and Maharaj personally showing by his own example that how it is so important to have equal association. So I can just go on because I have personally witnessed some things. I have heard from some senior devotees about Maharaj this quality.
And Maharaj makes it sure that everybody, all his godbrothers and god sisters must be treated as he's been treated. So always, it's not, it's not external, it is internal, very, very deep. I remember when Bhakti Sundar Govinda Maharaj was here, Maharaj called Radhanath Prabhu and myself. And from America, he was telling, Maharaj is sick, go and meet him. He is very sick, and you tell him that I am coming to meet him. In your office in Guru Sadai, Maharaj called. And I was, I think second time Maharaj ke saath baat karenge phone pe. But then Maharaj said, go and meet him. So both of us we went. One time I remember Maharaj, I was cooking for Maharaj, other devotees were also there. So suddenly Maharaj was supposed to meet Govinda Sundar Maharaj in Koikhali, Dumdum, Gaudiya Math. So Maharaj from airport only went, and Maharaj met him, and obviously because he went to the lunch time, so for that reason Maharaj offered him prasad, but he knew that I am cooking for him. So he called, Radhanath Prabhu called me, and then Maharaj spoke to me, Ananda Mohan Prabhu, I am so sorry, but what to do? My friends, my saviors, he used these words. The Vaishnavas, they have invited me for taking prasad, and I was unable to refuse. I promise you, next all the days I will take your prasad. Hare Krishna. So Maharaj is very personal, but he respects his godbrothers very much. And I have seen, I feel so happy. Kitna acha lagta tha, when they were all staying together, and then they are talking to each other. And I feel that this is the reason that we have joined ISKCON. Just talking about Krishna, talking about each other, about Prabhupada and about other wonderful services that Krishna has offered them. So I pray to Maharaj that this mood I have seen also in Gurudev also, and Maharaj is very, very particular about this. Maharaj always says that all my godbrothers are so special. One time when Jayapataka Swami Maharaj was very sick, Maharaj came and Maharaj was telling that, he's such a great soul and we try our level best to serve him. He gave one of his, I think Achyutananda, he's a doctor, Man Brahmachari, in the initial days to serve Srila Jayapataka Swami Maharaj throughout, in the difficulties of the pain that he was going through. And I have personally seen Bhakti Charu Maharaj, how much fond they were, about each other. So, like that, so I will request Maharaj to bless us that we can also imbibe these qualities, different qualities of Maharaj. And thank you very much for giving me a little more time. And there was no bell, though Jagdish Guru Prabhu was asking you to bell there. So I understood that. So it's okay. I think Murli Prabhu and his wife is also here. Thank you very much. Let us also try in Calcutta to have some sanghas like that. We are definitely trying our level best to do that. Thank you very much. Gaur Premanande. Hare Krishna. His Grace Anand Mohan Prabhu ki Jai. We are very, very fortunate to have the divine association of His Grace Murlidhar Prabhu and Her Grace Radharani Mataji. His Grace Murlidhar Prabhu has been practicing Krishna consciousness since 1991. He is expert and famous dentist by profession. He organizes dental camp at Barsana every year to serve the Dhamvasis and get their blessings. His Grace Janivas Prabhu was so happy with this service that he offered him service of making teeth for Lord Narsimdev. So he is also a transcendental dentist of Lord Narsimdev of Mayapur. Her Grace Radharani Mataji has been practicing Krishna consciousness since 1992
She is medical psychologist and professional marriage counselor. Both of them are exemplary parents to 3 daughters. Both of them offer training and seminars to train devotee counselors at ISKCON Chowpatty and Ramli. Besides their responsibilities at Chowpatty, they also regularly travel to Kolhapur to help develop Krishna conscious community there. Both of them are very senior trusted disciples of His Holiness Radhanath Swami Maharaj, and we welcome them by 3 times chanting Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. आप दोनों एक साथ रखेंगे तो अच्छा लगेगा। आप उसमें जाइए ना। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते राधानाथ स्वामी नामने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। महाराज ने जो जर्नी होम किताब लिखी है उसके पहले अध्याय में ही वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हमको बताते हैं, और वो है कि उनको उनके जो मतलब जूइश एक प्रीस्ट रैबाई जिनको कहते हैं, उन्होंने ये बताया था कि हमको भगवान से प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। कि बहुत अनेक बार ऐसे होता है हमारे जीवन में कि हमको जो चाहिए वो होता नहीं।
sometimes we get what we don't want and sometimes we don't get what we want. हमको जो चाहिए हमको नहीं मिलता है और कभी कभी जो नहीं चाहिए वो मिलता है, क्योंकि भौतिक जगत का नियम ही वो है कि जो चाहिए वो मिलता नहीं है। कभी कभी जो मिलता है वो जैसे हमको चाहिए वैसे होता नहीं है, और अगर होता भी है तो वो सनातन काल तक रहता नहीं है, तो इसीलिए दुख होता है। तो इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं भगवान से कि भगवान मुझे ये दे दो, मेरा ये कष्ट दूर कर दो, ऐसे वैसे हम प्रार्थना भगवान से करते हैं। पर सही प्रार्थना क्या है वो महाराज जर्नी होम में बताते हैं कि हम भगवान से ये नहीं कहते हैं कि मुझे जो चाहिए वो दे दो, वो कहते हैं कि लेट मी बी सो स्ट्रॉन्ग दैट आई कैन एक्सेप्ट व्हाट यू गिव मी। आपकी जो इच्छा है उसको मैं स्वीकार कर पाऊं, आपकी जो इच्छा है उसे मैं कर पाऊं, उतनी शक्ति आप मुझे दे दीजिए। और ये उन्होंने स्वयं अपने जीवन में उतारा है। बहुत बार हम देखते हैं हम परिस्थिति को बदलने की कोशिश करते हैं, हम लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, पर राधानाथ स्वामी महाराज का ऐसा दृष्टिकोण नहीं है। अपने शिष्यों को प्रोजेक्ट के लिए वो बताएंगे कि ये करना है वो करना है, पर कंट्रोल नहीं करते हैं, सबका ओपिनियन लेते हैं, फिर जो प्रोजेक्ट के लिए सबसे अच्छा होगा उसी का चुनाव करेंगे, फिर वो खुद का निर्णय हो या वो किसी और का निर्णय हो। He always wants to care। तो सबके लिए क्या करना चाहते हैं, सबकी सेवा करना चाहते हैं। He wants to care for everyone। तो हाल में रिसेंटली मैंने एक बात सुनी जिससे मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला, बहुत इंस्पिरेशन मिला, प्रेरणा मिली। तो हमारा चेतना प्रोग्राम जस्ट खत्म हुआ था और हम नीचे बैठे थे, बात कर रहे थे, और एक लड़की आई, उसने कहा कि अभी मुझे जाना है क्योंकि कल फिर से सेवा है। अगले दिन मंदिर में कुछ प्रोग्राम था, तो मैंने उनको पूछा क्या प्रोग्राम है, तो बहुत भीड़ होती है ना माता जी, इसीलिए हमको आना है। तो मैंने उनको पूछा आप क्राउड कंट्रोल सेवा में हो क्या? नहीं माता जी ऐसा बोलना नहीं है हमको, वी आर नॉट अलाउड टू से दिस। क्यों? नहीं, क्राउड कंट्रोल नहीं कहना है, महाराज ने कहा यू शुड नॉट से क्राउड कंट्रोल, यू शुड से क्राउड केयर, है ना। नहीं तो नॉर्मली हम कहते हैं ना कि क्राउड कंट्रोल करना है, डजंट लाइक टू यूज द वर्ड कंट्रोल। क्राउड कंट्रोल नहीं, क्राउड केयर। हम जो भी नियम बना रहे हैं यहाँ पे क्राउड के लिए वो उनके केयर के लिए, ताकि उनको कुछ कष्ट ना हो, इसलिए नहीं कि हमको कष्ट हो रहा है। तो हमेशा दूसरों के बारे में सोचना, वो कोई इनसे सीखे। तो मैं ये पॉइंट वहां पे भी बता रही थी कल लेक्चर में कि महाराज एक बार लंदन जा रहे थे और उन्होंने देखा कि एक बच्चा बहुत रो रहा था, चीख चीख के रो रहा था, और सभी चिढ़ रहे थे, सभी इरिटेट हो रहे थे, क्योंकि कोई सो रहा था, कोई वीडियो देख रहा था, कोई तो पुस्तक पढ़ रहा था, कोई अपने बाजू में बैठे हुए सीट पर जो व्यक्ति थे उनसे चर्चा कर रहे थे। तो बहुत इरिटेट हो रहे थे कि ये बच्चा रोना बंद क्यों नहीं कर देता, और सब लोग घूर रहे थे माँ बाप को। तो माँ बाप को भी बहुत एम्बेरेसिंग लग रहा था कि अरे हमारा बच्चा सबको डिस्टर्ब कर। अभी ड्रामा में भी होता है ऐसे, हमारे जब बॉम्बे में ड्रामास होते हैं तो पेरेंट्स चिल्ड्रन को बताया जाता है कि आपको लास्ट सीट्स लेने चाहिए, क्योंकि अगर बच्चा रोने लगता है तो तुरंत आपको उठ के बाहर जाना चाहिए। बहुत बार नहीं जाते हैं, वो वहीं पे शांत करने की कोशिश करते हैं, आधा ड्रामा खत्म हो जाता है और फिर वो बाहर जाते हैं, ऐसे हो जाता है। पर अभी एरोप्लेन में कोई बाहर कैसे जाएगा, है ना, उतर तो नहीं सकते प्लेन से, बाहर तो नहीं जा सकते। तो बहुत ट्राई कर रहे थे बच्चे को शांत करने के लिए, बच्चा शांत नहीं हो रहा था। तो सभी ऐसे गुस्से से देख रहे थे माँ बाप को और बच्चे को, पूरा ruined our journey ऐसे विचार। महाराज ने कहा वो क्या सोच रहे थे कि इस बच्चे ने हमको डिस्टर्ब किया अपने रोने से, बहुत तंग किया ये बच्चे ने। पर माँ क्या सोच रही थी? Anyone would like to guess? माँ क्या सोच रही होगी? Everybody is किसने कहा ये? हरे कृष्णा माता जी, वो माता को बताना स्वामी ने ऐसा। आप what were you saying? everybody is disliking my child. Everyone is disliking my child. Anybody else? माँ क्या सोच रही होगी? बच्चे को भूख लगी है, या
जब प्लेन टेक ऑफ होता है तो हमको भी होता है, कभी कभी कान में दर्द होता है, कभी पेट में दर्द होता है, बच्चे को कष्ट हो रहा है, तो माँ क्या सोचेगी कि मेरा जो बच्चा चीख चीख के रो रहा है, मेरे बच्चे को क्या कष्ट हो रहा है, वो बच्चे के बारे में सोचेगी, वो ये नहीं सोचेगी कि बच्चा रो रहा है इसीलिए मुझे कष्ट हो रहा है। तो इसको कहते हैं करुणा, दिस इज कंपैशन, कि सामने वाले को जो कष्ट हो रहा है उनके बारे में सोच के उनकी मदद करना, ये नहीं कि वो चिल्ला रहे इसीलिए हमको कष्ट हो रहा है, इनको निकाल दो यहाँ से, शांत वातावरण चाहिए। नहीं, सबको मदद करना है, ये उनका भाव हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा, ऑलवेज थिंकिंग अबाउट अदर्स। तो एक बार उन्होंने कहा था कि कृष्णा कॉन्शियसनेस इज रेवोल्यूशनरी, ये बहुत अलग है, कृष्ण भावना, ये जो मूवमेंट है हमारा, ये बहुत हटके है। और उन्होंने उदाहरण दिया कि अगर आप गाड़ी में जा रहे हो और आप सिग्नल पे गाड़ी रोकते हो और वहां कोई भीख मांगने आता है, तो आप क्या करेंगे, आप खिड़की को नीचे करके आप उनको कुछ देंगे, पैसे देंगे, या पैसे नहीं है तो एटलीस्ट प्रसाद देना चाहिए, सॉरी उनको प्रसाद देना चाहिए, और अगर प्रसाद नहीं है तो एटलीस्ट कुछ तो दीजिए, पैसे। तो हम कहते हैं पैसे देने से आपको कर्म लगते हैं, तो फिर कह रहे प्रसाद, ताकि आप प्रसाद दे पाओ, पर कुछ तो उनको दे दो, क्योंकि उन्होंने कहा जब हम कुछ नहीं देते हैं ना तो हमारा हृदय जो है ये क्या हो जाता है, पत्थर जैसे बन जाता है, हार्ड हार्टेड हो जाते हैं, हमको देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर कोई, आप गाड़ी में बैठे हो और सिग्नल पे कोई आता है और आपसे ऐसे भीख मांगता है, और आप जब खिड़की नीचे करते हो और उसको पैसे देने की कोशिश करते हो और वो कहता है नो गिव मी सर्विस, दैट इज अ डिवोटी, वो सेवा की भीख मांगता है, दैट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो दैट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो यही हमको सिखाते हैं कि हमको जब सेवा मिलता है वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर इट, सेवा करने का मौका मिलता है उसके लिए हमको कृतज्ञ रहना चाहिए, क्योंकि सेवा इतनी आसानी से नहीं मिलती है, वो भक्तों के और गुरु की कृपा से ही हमको सेवा प्राप्त होती है। तो जब हम सेवा करते हैं तो हमको मन में ये विचार आता है कि ये मैंने किया, पर हम कर ही नहीं पाते ना, अगर कोई हमको अवसर नहीं देता तो। अगर आप हमको यहाँ नहीं बिठाते तो हम नहीं बात कर पाते, है ना, अगर आप सुनते नहीं तो हमारे बात करने का मतलब ही नहीं होता। तो हम जब सेवा कर रहे हैं इसका कारण ये है कि कोई तो हमको सेवा करने का अवसर दे रहा है, प्रदान कर रहा है, वो वातावरण क्रिएट कर रहा है। तो वी शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल। और हमारा चाहिए कांस्टेंट थीम रहा है ग्रैटिट्यूड। और ये बता दे जर्नी होम में कि मेरे माता ने मुझे ये सिखाया कि वी शुड ऑलवेज से थैंक यू, हर एक चीज के लिए हमको हमेशा थैंक यू कहना चाहिए। और इट इज नॉट अबाउट व्हाट इज गिवन, अगर कोई गिफ्ट भी देता है तो क्या दिया है, कितना दिया है, अरे इनको ये नहीं चाहिए होगा इसीलिए दिया है ना, कई बार लोग सोचते हैं, पर वो बात नहीं है। किसी ने देने के बारे में सोचा भी तो हमको उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। एक भक्त ने मंदिर आना बंद कर दिया, डोनेशन देना बंद कर दिया, तो महाराज ने अनेक दूसरे भक्त से पूछा कि इनको देखा नहीं काफी समय से, तो जिनको पूछा गया उन्होंने कहा कि अभी वो आना बंद कर दिया है उन्होंने, और अभी डोनेशन भी नहीं देते। तो महाराज ने कहा इफ ही हैज गिवन इवन वंस यू शुड बी इटर्नली ग्रेटफुल टू, अगर एक बार भी दिया है तो आपको सनातन काल तक आपको कृतज्ञ रहना चाहिए उनके प्रति। तो ये जो है राधानाथ स्वामी महाराज का भाव है। हम अक्सर क्या करते हैं, मतलब हमारी ये टेंडेंसी होती है, मैं जब हम कह रहे हो तो मैं मेरे बारे में कह रही हूँ, हो सकता है आप ये नहीं करते, कि हमारे साथ लोग बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं, अच्छा कार्य हमारे साथ करते हैं, और एक बार अगर कुछ बुरा कह दिया तो वो मन में रह जाता है, उसको हम निकाल नहीं पाते कि इन्होंने मेरे साथ ऐसे किया या इन्होंने मेरे साथ ऐसे बात की। पर हमको क्या करना चाहिए कि उन्होंने जो किया है उसके बारे में सोचकर हमको कृतज्ञ रहना चाहिए। और अगर हम ये करते हैं तो हम वो जो नकारात्मक जो विचार आ रहे हैं उसको हमारे मन में से हटाने में कामयाब हो जाएंगे। तो ये ग्रैटिट्यूड का जो ये लेसन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जो हमारा दे दिया। इनफैक्ट हम जो सुबह संसार दावा प्रेयर गाते हैं ये पूरा ग्रैटिट्यूड का ही प्रेयर है, ग्रैटिट्यूड टू स्पिरिचुअल मास्टर। डेली हम जो गाते हैं कि करुणा के जो करुणा हमारे ऊपर बरसाते हैं, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, क्योंकि संसार में तो अग्नि लगने ही वाली है,
पर गुरु जो है वो करुणा बरसाते हैं, कृष्ण भावना की करुणा बरसाते हैं, और हमको भी सिखाते हैं कि हम दूसरों को करुणा कैसे दे सके। हाँ, ओपिनियन लेने की बात मैं बताऊं कि महाराज सबसे कभी भी हमारे काउंसलर्स मीटिंग होते हैं ना, तो महाराज बताएंगे कि ऐसे ऐसे डिसीजन लेना है, तो भी आप सब अपना अपना मत बताइए। तो सबका सुनेंगे और फिर वो बताएंगे कि उनको क्या चाहिए, और फिर कहेंगे नाउ ऑल ऑफ यू वोट। तो ऑब्वियसली सब लोग यही वोट करेंगे जो महाराज ने कहा है। और ऐसा नहीं कि महाराज से पूछने के लिए पूछ रहे हैं, वो सबका मत जानना चाहते हैं, फिर उसमें से फिर वो सोचेंगे और फिर वो अपना मत भी बताएंगे। तो सबकी बात वो सुनना चाहते हैं, वो कंट्रोल नहीं करना चाहते। जैसे मैंने कहा कोई प्रोजेक्ट होगा, मेन प्रोजेक्ट होगा, तो उसमें शायद वो अपनी बात बताएंगे और वो होगा। पर अगर आप एज एन इंडिविजुअल जाते हैं उनके पास, तो आपको वो प्रश्न पूछेंगे जिससे आप सोचेंगे, आप सोचना शुरू करेंगे, और फिर वो आपको ही पूछेंगे आपको क्या लगता है, और फिर वो पूछेंगे ऐसे वैसे। एक बार ऐसे हुआ था कि मेरे भाई जो है तभी डिवोटी नहीं थे, जब हम भक्ति में आए तो मेरे पिताजी, मेरी माँ कीर्तिदा माता जी, वृषभानु प्रभु और मैं, हम लोग मंदिर आते थे, और मेरे भाई मंदिर नहीं आते थे। और तभी गौर पूर्णिमा का फेस्टिवल 4-5 दिन, 1-2 दिन शोभा यात्रा, फिर और कुछ, फिर गौर पूर्णिमा, उसके बाद जगन्नाथ मिश्रा फेस्टिवल, ऐसे चलता था। तो फेस्टिवल्स काफी दिन चल रहे थे, तो मेरे भाई ने मेरे मम्मी को कहा आज शाम को मैं जब घर आऊंगा, अगर आप घर पे नहीं रहेंगे तो आप जब आओगे आप मुझे देखोगे घर पे। तो मम्मी को टेंशन आया। अगले दिन सवेरे मंदिर गई और महाराज से कहा, महाराज माय सन इज सेइंग लाइक दिस, व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए। तो महाराज ने उनको पूछा, आपके बेटे ने ऐसे कहा, आप अगर कल मंदिर आते हो, मतलब आज अगर शाम को मंदिर आते हो फिर से, व्हाट विल यू बी थिंकिंग अबाउट, आप क्या सोचेंगे। तो मम्मी ने सोचा कि मैं तो मेरे बेटे के बारे में सोचूंगी कि वो क्या कर रहा होगा, और अगर आप नहीं आए तो आप क्या सोचोगे। मैं सोचूंगी मंदिर में क्या चल रहा होगा। तो व्हाट डू यू थिंक यू शुड डू। तो महाराज ने डायरेक्ट बताया नहीं कि आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो महाराज अनेक बार हमारा ये अनुभव रहा है कि जब हम जाते हैं कोई समस्या का हल ढूंढने के लिए, वो हमको इस तरह से प्रश्न पूछते हैं ताकि हम सोचें, नहीं कि हम कहें कि महाराज ने बताया और फिर हम वो कर रहे हैं। He makes us think and makes us take a decision। क्योंकि उनको पता है कि अगर वो काउंसलिंग में एक रूल भी है, और मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, और जब मैं कोई भी रूल पढ़ती हूँ ना, तो मुझे लगता है अरे महाराज ये भी करते हैं, अच्छा महाराज ये भी फॉलो करते हैं, अच्छा महाराज वो भी फॉलो करते हैं। बिना कोई किताब पढ़े, पर he knows all the techniques and he applies all the techniques। क्यों? क्योंकि भगवान अंदर से प्रेरित करते हैं, क्योंकि भगवान से जुड़े हुए पूर्ण रूप से। क्या करते हैं हम, अगर किसी को डायरेक्ट एडवाइस देते हैं, अगर हम सही है तो हर बार हमारे पास आएंगे, वो सोचना बंद करेंगे, और अगर गलत है तो हमको दोष देंगे, है ना। तो लोगों को सोचने की जो शक्ति है उनकी बढ़ानी, तो राधानाथ स्वामी महाराज हमेशा ये करते हैं। और हाँ, तो एक बार ऐसे हुआ कि हमारे कुछ मीडिएशन और कम्युनिकेशन का कुछ सेमिनार था, और उसमें एक टॉपिक आया ऑम्बुड्समैन के बारे में। ऑम्बुड्समैन मतलब जो होता है मंदिर में, कहीं पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, पर वो सीक्रेट होते हैं, मतलब सबको पता नहीं होता है कि ये ऑम्बुड्समैन है। जिसको प्रॉब्लम है वो जाके उनसे बात कर सकते हैं, और पूरा सीक्रेसी मेंटेन किया जाता है। वो जो आप बताएंगे वो किसी को बताया नहीं जाएगा, और आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने में वो एक्शन लेंगे। तो चर्चा ये चल रही थी कि हमारे मंदिर में हमको ऑम्बुड्समैन की जरूरत है कि नहीं, एक व्यक्ति जो सेपरेट रहेगा, नॉट पार्ट ऑफ काउंसिलर सिस्टम, सेपरेट। और किसी को कोई प्रॉब्लम है अपने काउंसिलर के साथ या किसी और के साथ, तो आप जाके ऑम्बुड्समैन से बात कर सकते हैं। तो तभी महाराज ने प्रश्न पूछा कि हाउ मेनी ऑफ यू फील कि आवर टेम्पल नीड्स ऑम्बुड्समैन।
आप में से किन किन लोगों को लगता है कि हमारे मंदिर को ऑम्बुड्समैन की जरूरत है? तो मैंने हाथ ऊपर किया, फिर मैंने देखा कि किसी ने हाथ ऊपर नहीं किया था, तो मैंने धीरे से हाथ नीचे किया एंड आई फेल्ट वेरी एम्बेरेस्ड। मुझे बहुत शर्म लगा और मुझे बुरा भी लगा कि क्या मैं ये दिखाना चाह रही हूँ कि महाराज ने जो सिस्टम बनाया है ये काउंसलर्स का, उसमें कोई खोट है, इसलिए हमको ऑम्बुड्समैन की जरूरत है। तो आई वाज फीलिंग वेरी गिल्टी। तो मैंने एक लेटर भी भेजा महाराज को, पर वो महाराज को पहुंचा नहीं। कई 1-2-3 महीने बाद हम लोग कुछ प्रोग्राम करने, चेतना प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए महाराज का परमिशन लेने गए थे। उसके बाद मैंने महाराज को बताया कि महाराज आई एम वेरी सॉरी। व्हाट सॉरी फॉर व्हाट? तो तभी मैंने बताया, मैंने कहा कि महाराज मैंने आपको लेटर भेजा था, मुझे मिला नहीं। किसको दिया था? ऐसे रहने दीजिए महाराज, नहीं तो जिन्होंने नहीं दिया। तो फिर उन्होंने कहा कि सॉरी किस लिए? तो मैंने बताया कि ऐसे ऐसे हुआ था और मैंने ये कहा था कि ऑम्बुड्समैन इज नेसेसरी। She said, why are you sorry? I asked for opinion, you gave it. There is nothing wrong in giving your opinion. If you feel something strongly, you can give your opinion. So I felt so relieved ना, एकदम मन में से वो जो तनाव था वो निकल गया। तो he is always willing to listen. हमारी ये जिद नहीं होनी चाहिए कि हमने कह दिया इसीलिए गुरु को मानना चाहिए, ऑब्वियसली हम नहीं करेंगे वैसे, है ना? पर वो सुनते हैं सबकी। हमेशा कभी भी कोई भी समस्या लेके जो पहले आपकी बात सुनेंगे, पूर्ण रूप से सुनेंगे। हमारे पास कोई आता है तो हम क्या करते हैं, जनरल टेंडेंसी है वो एक वाक्य बोले तो और बोलो मत, मैं समझ गया प्रॉब्लम, अभी मैं बताता हूँ। सब सेट है, जब सुन रहे तभी मन में सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है कि इसके लिए व्हाट इज द प्रॉब्लम एंड इसको क्या क्या सॉल्यूशन की आवश्यकता है। महाराज ऐसे नहीं करते, पूरा सुन लेते हैं, प्रॉब्लम समझ लेते हैं, फिर उनको सोचने देते हैं और फिर उन्हीं को पूछते हैं। अगर बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहा है तो इनमें बता देंगे कुछ, अदरवाइज ही विल नॉट ट्राई टू कंट्रोल और ही विल नॉट ट्राई टू इंटरफेयर। फिर एक मुझे याद आ रहा है कि जब एक चक्र को यात्रा गई थी बहुत साल पहले, आई थिंक 2004 या 2000 में कभी कोई यात्रा गई थी, तभी सच्चिदानंद स्वामी महाराज और राधानाथ स्वामी महाराज दोनों थे वहां पे एक चक्र में। और तभी सिटिंग तरफ थे, ऐसे अंधेरा था, ऐसी गुफा जैसे थी वहां पे, और सब बैठे थे और लाइट भी नहीं था, अंधेरा था और बातें हो रही थी। और तभी राधानाथ स्वामी महाराज ने एक बात की, चर्चा हो रही थी नित्यानंद प्रभु की कृपा के बारे में। और तभी उन्होंने कहा कि नित्यानंद प्रभु की कृपा इतनी महान है। उन्होंने सच्चिदानंद महाराज को पूछा कि आप जर्मनी के हैं, सबको पता है जर्मनी के हैं, कि आपके कोई रिलेटिव्स फादर वगैरह नाजी से कनेक्टेड होंगे? बोले हाँ थे। बोले आई एम अ जू, you are not Nazi but you are related to Nazi। but नित्यानंद प्रभु की कृपा देखिए कि हम दोनों यहाँ बैठ के गले मिल रहे और जय सच्चिनंदन गौर हरि हम गा रहे। तो कितना मतलब इतने अच्छे से ये पॉइंट लाया कि हमारे बीच में कितने भी डिफरेंसेस हो, कितना भी मतभेद हो सोचने में भी, पर अगर हम भगवान का नाम ले रहे हैं और श्री गौर निताई का आश्रय ले रहे हैं तो वो सब मतभेद जो है वो सॉल्व हो जाते हैं। राधेश्याम प्रभु बता रहे थे, अभी हम पूना में हमारा काउंसलर मीट हुआ तो बता रहे थे कि एक बार उन्होंने महाराज को पूछा, उन्होंने कहा कि वो एक बहुत सीनियर डिवोटी जो डेटी वर्शिप से कनेक्टेड है उनसे बात कर रहे थे, और फिर उन्होंने महाराज से भी पूछा कुछ, जब एमवीसीसी में डिटेल्स वेलकमिंग हो रहे थे, दोनों ने अलग अलग मत दिया। तो उन्होंने महाराज को पूछा कि महाराज ऐसे कैसे हो सकता है कि आप बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं पर आपके मत अलग है? तो महाराज ने कहा फ्रेंड्स है इसका मतलब नहीं कि हमारा मत एक ही होगा, मत अलग अलग हो सकता है। फिर महाराज ने उनको कहा बैठो, और वहां पे एक ऐसे ये था डिश जैसे था जिसमें वो डेकोरेशन के लिए रखते हैं ना, वो पेबल्स अलग अलग रंगों के सफेद ग्लास के ऐसे बोल में रखते हैं शो के लिए, तो काले और सफेद दोनों थे। तो महाराज ने कहा देखिए इसमें काले भी हैं और इसमें सफेद भी है, तो ये जो काले हैं ये हमारे मतभेद है, और जो सफेद है ये वो पेबल्स है विच आर कॉमननेस, मतलब हम हमारे बीच में कॉमन क्या है, व्हाट डू यू से फॉर कॉमन इन हिंदी? समान, समान क्या है?
तो आई चूज टू फोकस ऑन द कॉमननेस, कि जो हमारे बीच में जो एक संबंध है, जो कनेक्शन है, कॉमननेस है, या शेयर्ड पर्पस जिसको कहते हैं, शेयर्ड गोल है, मैं उस पर फोकस करता हूँ। मतभेद तो होगा पर हमको उस पर फोकस नहीं करना है। जो कॉमन में है, जो हम करते हैं, व्हाट वी एग्री ऑन, वी हैव टू फोकस ऑन दैट। तो बहुत सुंदर दृष्टिकोण दिखाते हैं कि कैसे हमको कभी कभी लगता है कि अगर कोई हमारे साथ एग्री नहीं कर रहा तो वो हमारा दुश्मन है। जरूरी नहीं कि वो दुश्मन है, he may be your friend but may not agree with you। तो ये हमको स्वीकार करना है। तो ये पॉइंट महाराज ने बहुत अच्छी तरह से समझाया। फिर और एक पॉइंट उन्होंने बताया कि एक बार हम गए थे उनके साथ, उनके पास बात करने के लिए, और कुछ प्रॉब्लम हुआ था, थोड़े डिस्टर्ब थे। तो हमने एक पॉइंट बताया हमारा, और तभी महाराज ने कहा कि, उन्होंने कहा कि नेवर जज अ पर्सन, किसी को जज मत कीजिए। आपको पता नहीं है कि उनको क्या दुख होगा, उन पे क्या बीत रही होगी, उनका अपब्रिंगिंग क्या होगा ना, अभी उनके जीवन में परिस्थिति क्या है, तो डोंट जज। उन्होंने कहा एक बार मैंने किसी को जज किया था और फिर मुझे पता चला कि मैं गलत था, तो उसके बाद आई डोंट जज एनीबॉडी। और मुझे इसका अनुभव हुआ, एंड तभी मुझे याद आया महाराज ने जो बताया था। तो एक बार हम भक्ति वेदांत हॉल में प्रसाद दे रहे थे, फेस्टिवल था, बहुत क्राउड था, और क्राउड केयर का टीम था वहां पे। एंड एक माताजी और उनका बेटा, टीनेज से 18 या 20 साल का बच्चा होगा, बेटा होगा, वो आके वहां बैठ गए। तो मैंने देखा, मैंने सोचा मन में शायद उनको पता नहीं होगा कि ये भक्ति वेदांत हॉल लेडीज के लिए बैठने के। तो एक ब्रह्मचारी उनके पास आए और उनको ऐसे उठने के लिए, मतलब हैंड से इंडिकेट कर रहे थे बाहर चलने के लिए। तो वो ऐसे कह रहे थे दूर से, जैसे माता जी पीछे बैठे, मैं वहां बैठी हूँ और ये यहाँ बैठे, इतना गैप था। मैंने देखा वो ऐसे ऐसे कर रहे थे। मैं सोच रही थी कि वो कह रहे बाहर जाओ, और वो जा नहीं रहे। थोड़े समय बाद और एक ब्रह्मचारी आए, उन्होंने भी कहा कि ऐसे कुछ इंडिकेट कर रहे थे बाहर जाने के लिए, वो नहीं गए। उसके बाद एक और सीनियर माताजी आके मेरे पास बैठ गई। मैंने उनको कहा कि शायद इनको पता नहीं है, 2-3 बार उनसे कहा गया है पर वो उठ के जा नहीं रहे हैं, वो पता नहीं होगा एटिकेट क्या है, यहाँ पे लेडीज और प्रभु जी साथ में नहीं बैठते हैं। तो उसने कहा नहीं, ये डिवोटीज दे हैव कम फ्रॉम अब्रॉड, और ये बहुत ही मतलब काफी सीनियर है। एक्चुअली इनके लिए प्रसाद वृंदावन गार्डन, वृंदावन फॉरेस्ट में ऑर्गेनाइज किया है, गोविंद दास का प्रसाद उनके लिए वहां अरेंज किया है। पर वो कह रहे कि नहीं, हमको डिवोटीज के साथ बैठ के जो डिवोटीज खा रहे हमको वो खाना है। हाउ कुड आई बी सो रॉन्ग इन माई थिंकिंग। तो तभी मुझे ये याद है कि महाराज जी जो का, हमको कभी कभी बैकग्राउंड पता भी नहीं होता है, और हम एक नतीजे पे पहुंच जाते हैं, निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं कि ये भक्त ऐसा है, वो भक्त कैसा है। भक्त कैसा है, उसके मन में क्या चल रहा है, ये भगवान जानते हैं। भगवान जज नहीं करते, गुरु जज नहीं करते, तो हम क्यों करते हैं? हमको भी ये नहीं करना चाहिए। तो ये एक लेसन उनसे सीखा। फिर एक बार उन्होंने देखा मैं लेट सोती थी रात को, सवेरे उठ के मंगल आरती में हम दोनों जाते थे, फैमिली जॉइंट फैमिली था, सोने में लेट हो जाता था। तो मैं ऐसे खड़े कभी कभी ऐसे अपने आप को ना ऐसे पिंच माई सेल्फ, एक्चुअली ऐसे जागरण करने के लिए पानी लेके मुंह पे लगाती थी। तो महाराज ने बुलाया, कम टू माई रूम। तो वहां गए तो उन्होंने वो श्लोक पढ़वाया मुझसे, ओपन भगवद गीता रेड दिस युक्ता हारो युक्त, वो वाला श्लोक। उन्होंने कहा कितने घंटों के लिए सोते हो? महाराज 5, 4.5, 5 घंटा हो जाता था। दिन में आराम करते हो? महाराज हाँ, कभी आधा 1 घंटा। हमको फायर क्रैकर्स नहीं चाहिए जो आएंगे और जाएंगे। प्रॉफिट, वी वांट यू टू रिमेन इन दिस मोमेंट, एंड फॉर दैट यू हैव टू बी बैलेंस्ड। आपको सही तरह से सेवा करनी है, उतना ही आराम भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। तो बैलेंस्ड, हमको अपने जीवन में बैलेंस कैसे लाना चाहिए वो उन्होंने सिखाया। फिर एज अ लेडी मैंने एक बार उनको पूछा कि हमारे घर में जो एल्डर्स है वो कहते हैं कि पूरा घर सुबह साफ करके फिर मंदिर जाओ, और हमको मंगल आरती में आना है, तो कैसे किया जाए? नहीं करेंगे तो उनको बुरा लगेगा, और अगर करूंगी तो मंगल आरती में उतना जल्दी तो मैं नहीं उठ सकती क्योंकि लेट सोते हैं। तो उन्होंने कहा
कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लीन द हाउस। घर को स्वच्छ रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका घर नहीं है, वो जगन्नाथ का घर है और उनके घर को आपको स्वच्छ रखना है। और आपका जो किचन है वो आपका किचन नहीं है, वो श्रीमती राधा रानी का किचन है, क्योंकि श्रीमती राधा रानी इज ऑलवेज कुकिंग फॉर कृष्णा। सो यू आर कीपिंग कृष्णाज हाउस क्लीन। तो ये एक सेंटेंस से इतना मेरे दृष्टिकोण में चेंज आ गया। तो आई वाज थिंकिंग, ओ माय गॉड, आई हैव टू क्लीन द हाउस। अरे मुझे से घर साफ करना पड़ता है, तो मतलब ये ऐसे जैसे जुर्म हो रहा है मेरे ऊपर। अगर मैं सोचती हूँ कि मुझे राधा रानी का घर या जगन्नाथ का घर साफ करने को मिल रहा है, आई एम गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू क्लीन द लॉर्ड्स हाउस, देन इट डजंट फील लाइक अ बर्डन। वो बोझा नहीं लगता है। महाराज हमेशा कहते हैं बर्डन ऑफ लव। माँ जब बच्चे को संभालती, दैट इज अ बर्डन ऑफ लव। बर्डन ही है वो, इजी नहीं होता है बच्चे को संभालना, पर इट इज अ बर्डन ऑफ लव बिकॉज यू चूज टू डू इट। आप उसको स्वीकार करते हो। तो कैसे हम अपना दृष्टिकोण जब बदलते हैं तो फिर हमारी भावना बदल जाती है। फिर प्रभु जी वहां बता रहे थे कि हम जब दोनों महाराज को मिले थे, हम जब यूएस गए थे वहां मिले थे, तो तभी उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई थी और हमने उनको कहा कि महाराज के आपके जीवन में इतने नकारात्मक घटनाएं घड़ी हैं, तो आप कैसे, हाउ यू रिमेन, मतलब कैसे आप पॉजिटिव रहते हो। तो उन्होंने कहा कि नेगेटिव तो आता है जीवन में, बट आई प्रोसेस इट एंड आई मेक इट पॉजिटिव। मैं उसको पॉजिटिव बना देता हूँ, क्योंकि वो अपनी सोच बदलते हैं उस घटना के बारे में। तो हमारे लिए भी ये सीख है कि कोई भी घटना हमारे जीवन में जब घटती है तो हम उसके बारे में क्या सोचते हैं वो महत्वपूर्ण है। घटना तो घड़ी, पर व्हाट आर वी थिंकिंग अबाउट दैट सिचुएशन, दैट विल डिटरमाइन कि हाउ वी फील। हमको क्रोध आ रहा है या हम शांत हैं। तो उन्होंने अपने उदाहरण से बहुत बार ये सब पॉइंट्स हमको सिखाए हैं। जर्नी होम में तो एक एक चीज जो है वो हमको बहुत सारे पॉइंट्स हमको सिखाती हैं और बहुत सारे पॉइंट्स है, पर प्रभु जी को भी बात करना है। तो प्रीचिंग के बारे में उन्होंने बताया कि हमको प्रचार कैसे करना है। हमारे इक्वल्स, हमारे जूनियर्स, हमारे सीनियर्स, हम जब प्रचार करते हैं तो हमको कैसे करना है। अगर हम जूनियर हैं, हमारे से तो जूनियर हैं जिनको प्रचार कर रहे हैं, या तो सीनियर हो सकते हैं इन एज, वो बता रही हूँ मैं, डिवोटीज के बारे में। तो उन्होंने कहा था कि आपको अच्छा उदाहरण सेट करना चाहिए, शुड सेट अ वेरी गुड एग्जाम्पल, और आपको बहुत प्रेम से उन व्यक्तियों के साथ बर्ताव करना चाहिए। तो फिर क्या होगा, उनको इच्छा होगी कि अरे ये इतने अच्छे हैं तो मुझे भी इनके जैसे बनना है। पर अगर हम फोर्स करते हैं, हम कंट्रोल करते हैं, तो लोग क्या सोचेंगे, अरे नहीं, ये फॉलो करना ही नहीं है। और उन्होंने ये हमेशा स्ट्रेस किया कि वी शुड ऑलवेज मिक्स एसोसिएट विद इक्वल्स, क्योंकि हमारे जूनियर जो हैं वो हमको चढ़ाएंगे सम्मान देके। हाँ, चने के झाड़ पर बोलते हैं ना, थोड़ा अप्रिशिएट करके ये करेंगे, पर और सीनियर एनकरेज करेंगे, पर इक्वल क्या करेंगे, धुलाई करेंगे ना। अगर हम गलती करते दे विल करेक्ट अस, तो देन वी आर सेफ। एक जोक के मैंने एक बार सुना था कि एक बार फायर स्टेशन में आग लग गई थी और खिड़की से सब कूद रहे थे नीचे। 2-4 सोल्जर, फायर सोल्जर ने एक नेट पकड़ा था, तो जो भी कूद रहा था वो नेट पे गिर रहा था। फिर आया सुपरिंटेंडेंट, जो फायर स्टेशन के मेन जो बॉस थे, उनकी बारी आई जंप करने के लिए। उन्होंने जब जंप किया, सबने क्या किया होगा, सैल्यूट किया सबने। तो फिर क्या हो गया, गिर गए। तो हमको सैल्यूट नहीं चाहिए, हमको सेफ्टी नेट चाहिए। तो जितना हम अपने इक्वल्स के साथ हम संग रखेंगे, वी आर सेफ। और महाराज जी अपने जीवन में करते हैं। हुआ है ऐसे कभी कभी गॉड ब्रदर्स ने करेक्ट वगैरह किया है, तो वो उनकी बातें सुनते हैं, बहुत नम्रता से स्वीकार करते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं। और वो कहते भी हैं, आई फील वेरी सेफ व्हेन आई एम सराउंडेड बाय माय गॉड ब्रदर्स। ये बहुत एक इम्पोर्टेंट सीख है हमारे लिए, क्योंकि इट्स वेरी कंफर्टेबल टू बी विद जूनियर्स ना, क्योंकि वो सिफारिश करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, सीनियर्स एनकरेज करेंगे। बट हकीकत कौन जानता है, इक्वल जानते हैं।
इसीलिए उनके साथ संग करना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और महाराज का केयर का एक और ये लास्ट इसके साथ एंड करती हूँ। तो मेरी बेटी जब बीमार थी, 4 साल की थी, तभी उनको बीमारी हो गई थी, बहुत बड़ी बीमारी हुई थी। और सब डिवोटीज प्रे कर रहे थे। और एक बार मैं महाराज से मिली तो उन्होंने पूछा कि वो कैसी है, तो मैंने कहा महाराज शी इज गुड, इनफैक्ट कंपेयर टू अदर पेशेंट्स जिनको वही प्रॉब्लम है वो काफी इम्प्रूव हो रही है। और फिर मैंने कहा कि महाराज थैंक यू फॉर योर प्रेयर्स, आप उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं इसलिए वो ठीक हो रही है। तो उन्होंने कहा आई एम प्रेइंग फॉर हर बट आई एम प्रेइंग फॉर यू ऑल्सो। तभी मुझे रियलाइज हुआ कि मैं जो काम थी वो प्रेयर्स के वजह से था, इट वॉज नॉट माई ओन स्ट्रेंथ। डिवोटीज प्रार्थना कर रहे थे, महाराज प्रार्थना कर रहे थे, इसीलिए मैं जो है वो मेंटेन कर पाई। तो इनकी इतनी करुणा है कि अपने शिष्यों के लिए, सभी के लिए बहुत करुणा है हृदय में। और उस करुणा का अगर थोड़ा एक छोटा सा अंश भी अगर हमारे अंदर आ जाए, जो श्रील प्रभुपाद के हृदय में भी था, वो रोए जब उन्होंने देखा कि कुत्तों के साथ छोटा बच्चा लड़ रहा है प्रसाद के लिए। तो ये करुणा का जब अंश हमारे अंदर आएगा तो हम भी हमारे गुरु महाराज और श्रील प्रभुपाद के आंदोलन के लिए कुछ कर पाएंगे। और गुरु का भाव जानना, गुरु अपने गुरु की सेवा किस तरह से करना चाहते हैं वो जानना, और उसमें उस कार्य में दासानुदास बनकर उनकी मदद करना, ये करने से हम अपने गुरु महाराज की सेवा अच्छी तरह से कर पाएंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू। How much time will we? Huh? Up to 12:15. आधा घंटा। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगुणा रघुनाथं सत्तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सर्वमिता श्री शाखा नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते राधानाथ स्वामी नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी चारि निर्विशेष शून्यवादी पश्चात् देशकाले वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपासिन्धुभ्यो चक्रीदानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे कृष्णा। एक दो तीन मुद्दे पर मैं जरा आपके साथ थोड़ा शेयर करने जाऊंगा। कल ही मैं आचार्य प्रभु के साथ था तो बता रहे थे कि किस तरह से न्यूटन की जो जमीन खरीदने के पहले कैसे राधानाथ महाराज वहां चले गए और किस तरह चले गए वो भी बताया उन्होंने। जैसे नाला क्रॉस करके दो बाम्बू के ऊपर क्रॉस करके वहां चले गए, वहां थोड़ा जप कर लिया, थोड़ा प्रार्थना की, उसके बाद में बोला क्या यू कैन टेक दिस लैंड। तो उसी तरह से माधवराम प्रभु जो है, जब भी वाड़ा का जो लैंड मिली उसके पहले बहुत सारे जमीनें देख रहे थे, तो उन्होंने अपने पालघर में भी काफी सारे जमीन दिखाई उनको, तो सब महाराज ना 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 बोल रहे थे। तो ऐसे ऐसे जमीन दिखाई जहाँ पानी का व्यवस्था थी, अच्छा फसल होने वाला वैसी जगह दिखाई, हरियाली, फिर भी महाराज नकारते थे, सब नकारते थे। तो महाराज को उन्होंने पूछा
विवश होके बोले महाराज हम आपको इतना दिखा रहे, आप और अच्छे से अच्छे बढ़िया से बढ़िया हम दिखा रहे आपके लिए, फिर भी आप क्यों पसंद नहीं कर रहे हो? तो महाराज ने उनको एक, कभी महाराज ऐसे कभी बताते नहीं सामने से, लेकिन जो उन्होंने बताया उससे वो भी हैरान हो गया, हम भी जरा थोड़ा सोचने लगे कि यहाँ महाराज ऐसे है। तो बोले महाराज बोले उनको कि मैं आपकी जैसे नहीं हूं कि जहाँ देख लिया भारी दृष्टि से और खरीद लिया। बोले फॉर मी ना कृष्णा टू रिवील फ्रॉम विद इन माय हार्ट कि ये जगह सही है कि नहीं करके, और फिर बाद में फिर मैं बता सकता हूँ। तो जब ये बाड़ा चले गए तभी वो बोले कृष्णा रिवील दिस, नाउ यू कैन बाय दिस प्लेस। तो इससे समझ में आता है कि जो भी कार्य महाराज करते हैं, कृष्णा डायरेक्टली रिवीलिंग फ्रॉम विद इन हिज हार्ट। जो भी जिस तरह से आचार्य ने मुझे बताया, मुझे वो घटना याद आई कि ऐसे नहीं कि तुरंत देखकर बोल दिया कि ले लो, नहीं, थोड़ा वहां प्रार्थना की, मेडिटेट किया, फिर बाद में देख लिया। सो इज कॉन्स्टेंटली गाइडेड बाय कृष्णा फ्रॉम विद इन हिज हार्ट, कॉन्स्टेंटली गाइडेड। जब भी किसके लिए भी प्रार्थना करते हैं ना, तो फिर वो सोच के प्रार्थना करके फिर बाद में कुछ कहते हैं किसके लिए, और सही होता है। हमको ऐसा भारी दृष्टि से पता चल नहीं पाता है कि ऐसे क्यों, लेकिन फिर बाद में पता चलता है कि हाँ ये गुरु की कृपा होती है। हम पहली बार 31 साल पहले हम अंबाला चले गए थे। मैं फिर कुरुक्षेत्र के बारे में बात कर रहा था, लेकिन उसके पहले अंबाला में एक प्रोग्राम होने वाला था। तो एक छोटी ग्रुप थी, मैं और 2 भक्त और महाराज, मेरा पहला महाराज के साथ फिजिकल एसोसिएशन। तो अंबाला जाने वाले थे, किस तरह से यहाँ से प्लेन टेक ऑफ किया, लेकिन फिर कुछ प्रॉब्लम हो गया, फिर प्लेन वापस आ गई बम्बई। और उस समय पहली बार वो जो है मेनका गांधी से मिले, मेनका गांधी से उनका परिचय हो गया। तभी एनवायरमेंट मिनिस्टर थी, तो उन्होंने मार्च को डायरेक्टली चैलेंज किया कि व्हाट आर यू डूइंग फॉर द एनवायरमेंट, आप ये परिवर्तन कर क्या कर रहे हो? तो डायरेक्ट चैलेंज किया। तो महाराज बोले यार नो, वी आर आल्सो डूइंग समथिंग फॉर द एनवायरमेंट। हम क्या करते, लोगों को हरिनाम का जाप करवाते, उससे हृदय उनका शुद्ध हो जाता है, हृदय शुद्ध होने से बाहर शुद्ध हो जाता है। सो वी आर आल्सो क्लीनिंग द एनवायरमेंट, ऐसे करके उनको उत्तर दिया उन्होंने। लेकिन हम अंबाला पहुंच नहीं पाए। ऐसा हो गया कि हम जहाँ पहुंच गए तो कोई हमें वहां से लेके जाने के लिए रुकने वाले थे, लेकिन किसी तरह से 2 घंटा देरी से निकले। तो इसलिए हम यही थे दिल्ली में ही, लेकिन फिर दिल्ली में थे तो दिल्ली में पता चला कि जो हमें लेके जाने तो नहीं है, तो हमको दूसरा एक व्हीकल करना पड़ा, क्योंकि बोले कि अंबाला नहीं जाएगा ये गाड़ी। तो महाराज बोले चलो लेट्स टेक अनदर व्हीकल। तो मैं महाराज को पूछा था, महाराज कैसे, कहाँ जाएंगे आप? क्योंकि एड्रेस नहीं था तभी, 1991 में मोबाइल्स नहीं थे, मोबाइल्स, और किसको कांटेक्ट करने का वो किसी को नहीं पता। वो भक्त भी चले गए थे। महाराज लेट्स गो। मैं मेरी बुद्धि महाराज गो वेयर, अंबाला में कहाँ जाएंगे, कुछ तो पता रहना चाहिए किधर है। बोले लेट्स गो। और बोला ठीक है, महाराज बोले तो चले जाते हैं। हम दूसरे टेम्पो हायर की और फिर जा रहे थे। मैं ऐसे सोच रहा था मन में कि ये पता नहीं अंबाला जाके किसको पूछना पड़ेगा किधर प्रोग्राम हरे कृष्णा। तभी हरे कृष्णा भी हम हरे कृष्णा के साथ नहीं जुड़े थे, हम अलग हमारा एक मंदिर का नाम था लीग आउट डिवोटीज करके। तो पता नहीं एकाएक रास्ते पे, बीच रास्ते पे कुछ भी नहीं है, जैसे आप हाईवे पे जा रहे हो, कोई आदमी दिखाई नहीं देता, वहां कृष्णानाथ को दिखाई दिया। चलते तो ऐसे अकेले जा रहे, घूम रहे, पता नहीं किधर घूम रहे। तो महाराज ने दिखा, बोला सी कृष्णानाथ इज गोइंग। तो फिर उनको बिठा दिया, तो प्रोग्राम में उनको सब पता था कहाँ जाना था। तो हम सही जगह पे वहां पहुंच गए। लेट हो गया था
लेक्चर हो चुका था, लेकिन महाराज ने वहां कीर्तन किया और फिर चले आए। फिर हम इसी समय की बात है 1991 गीता जयंती के उत्सव पे हमको महाराज वहां लेके गए जहां गीता सुनाई थी। तो वहां के एक निवासी महाराज को चैलेंज करने लगे। महाराज ने उन्हें वहां क्या किया, लेट्स रीड द एंटायर 18 चैप्टर, सॉरी 18 ऑल द 18 चैप्टर्स करके ऐसे सुनाया हमको। हमने अच्छे से सुना क्योंकि वो वातावरण था, सवेरे का समय था, 5 बजे 5:30 बजे। और किसी ने पूछा, कोई एक वहीं के लोग सदस्य कुरुक्षेत्र के, तो उन्होंने डायरेक्टली महाराज को चैलेंज किया, बोला महाराज हाउ डू यू नो दैट दिस इज द प्लेस। वो भी स्कॉलर थे। बोले हाउ डू यू नो दैट दिस इज द प्लेस वेयर कृष्णा स्पोक भगवद गीता। डायरेक्ट चैलेंज। तो महाराज ने नम्र होकर उनके बोले कि we can come to know only with a very pure at heart. Then you can hear the verses of Bhagavad Gita being spoken by Krishna to Arjun in your heart. तो महाराज ने इतने गंभीरता से उनको आंसर किया तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। ऐसे उन्होंने बताया कि मुझे सुनाई दे रहा है, लेकिन किस तरह से वो बताए कि अपना हृदय शुद्ध होना चाहिए, फिर ही हम जो है इसको समझ सकते हैं कि कृष्णा इज रिवीलिंग फ्रॉम विदिन हार्ट। एक यात्रा में हम द्वारका चले गए थे, तो वहां हमको वहां जाना था, प्रभास क्षेत्र जाना था। तो किसी ने बताया कि वो जो वहां के जो गाइड थे, बहुत पहली बात, उस समय की बात है 93-94 की बात है। तो हम लोग द्वारका चले गए थे, तो कोई स्मशान घाट जो है वो गाइड ने बताया कि ये प्रभास क्षेत्र है। तो हम लोग ने एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि वो गाइड ने बताया करके। तो महाराज बोले नहीं, ये प्रभास क्षेत्र नहीं है। तो वहां के हमारे भक्त है समूह में, वो उनके द्वारा जो हम द्वारका में चले गए थे, तो वो बोले नहीं ना महाराज, दिस प्लेस एवरीवन इज विजिटिंग दिस प्लेस। फिर हमको आगे लेके जाए और वहां खड़े रहे। महाराज बोले दिस इज द प्लेस, ये प्रभास क्षेत्र है। अब यू कैन टेक योर बात हियर, दिस प्रभास क्षेत्र। फिर बाद में पता चला कि शास्त्र के हिसाब से वो जगह प्रभास क्षेत्र है, सही है, और ये नहीं था। हमें बाद में पता चला उस धनुष कोड़ी, हम लोग उसी समय के बाद में, तो हम रामेश्वरम हम गए थे तभी यात्रा के लिए। तो रामेश्वरम गए थे तो हम लोग धनुष कोड़ी चले गए, और वैसे ही वहां का गाइड बोले कि ये धनुष कोड़ी है। तो महाराज बोले ये धनुष कोड़ी नहीं है। हम सबको फिर चलाया महाराज ने। हम कुछ थोड़े समय के लिए चले, पता नहीं कौन कौन थे उस समय, यहाँ वो चला करके एक कोने पे ले गए और महाराज उधर रुके, बोले दिस इज धनुष कोड़ी। और फिर हम लोग ने फिर वहां स्नान किया सब कुछ, और फिर हम लोग वापस आ गए। तो ऐसी सब कभी कभी घटना हम देखते हैं तो हमको पता चलता है कि एक्चुअली ही इज गाइडेड बाय द लॉर्ड फ्रॉम विद इन द हार्ट। तो कभी कभी मुझे लगता है ना कि महाराज अभी कलकत्ता में ज्यादा समय दे रहे हैं, बॉम्बे में नहीं दे रहे। आते सीधा जीवी चले जाते, चौपाटी में बहुत समय कम रहते, लेकिन कलकत्ता छोड़ते नहीं महाराज। कलकत्ता प्लान था, ये बात भी मई में जब भी आए थे तो उनका प्लान था कि कोलकाता जाने का। बाकी हमारे कोल्हापुर में उनको विनती कर रहा हूँ कि हमारा टीटी इंस्टॉलेशन वहां करना है प्लीज। वो भी उन्होंने हाँ बोला था, लेकिन बोले मैं आने के बाद करूंगा नेक्स्ट टाइम। लेकिन कोलकाता का प्लान उसके अंदर था 6 दिन 7 दिन का। तो हमेशा मैं सोचता था कि क्यों कलकत्ता में, क्या है क्या कलकत्ता में। लेकिन जब मैं 4 महीने पहले उल्टारंगा पहुंचा था और फिर प्रभुपाद जन्म स्थान देखा, राधारमण प्रभु की कृपा से उनके बारे में कैसे यहाँ से क्या सुना, और फिर कल आचार्य प्रभु ने पूरा जो बताया, तो उससे पता चला कि सही है महाराज जो कर रहे वो उसका कुछ वजह है जिसके लिए वो कर रहे, और कैसे कर रहे, क्यों कर रहे, क्योंकि कृष्णा इज गाइडिंग फ्रॉम विद इन हार्ट। तो मैं शांत हो गया। मैं ऐसा सोचता हूँ कि उनको कलकत्ता में ज्यादा समय स्पेंड करने दीजिए, क्योंकि वो कुछ कार्य कर रहे हैं, यानी जो भी वो कार्य कर रहे हैं ना, इज गाइडेड बाय द लॉर्ड।
ऐसा मैं कभी लगता हूँ कि इनिशिएशन महाराज नहीं दे रहे. He will give when the right time comes, and he will give. हमको सिर्फ पेशेंस रखना है और कुछ नहीं. We cannot judge him because he is always guided by the Lord in his heart. This is what I understood. एक चीज बताते हैं. दूसरी चीज है कि जब मायापुर पर बात किया तो महाराज चतुर है. He is very smart how to get devotees association and how the congregation can get a devotees association. भक्तों का वरिष्ठ वैष्णव कोई हो तो उनका संग किस तरह से हमें मिलना चाहिए, वो चतुरता से वो कार्य करते हैं. जब 2000 में पहली बार जनास को 30 साल के बाद मायापुर छोड़ के बेलगांव पहुंचे और बेलगांव से कोल्हापुर आए और कोल्हापुर से बॉम्बे आए और फिर बॉम्बे में आने के बाद उन्होंने एक व्यक्त किया महाराज को कि मेरा दांत का बहुत तकलीफ है, मुझे दांत का इलाज करवा सकते हैं. तो महाराज ने मुझे बताया कि इनका देख लो क्या है करके. तब तक काफी समय हो गया था, 10-15 दिन हो गए थे. बेलगांव कोल्हापुर करके बॉम्बे आए थे जनानिवास को. तो पहली बार बॉम्बे में आए थे तो मैंने चेक किया और फिर चेक करने के बाद पता चला कि उनके काफी सारे दांतों में इलाज करना है. रूट कैनाल कई दांतों में, उसके ऊपर कैप हटाने का. और उनका मैं सुन के ना मुझे रोना आया. जनानिवास को बोले कि हमेशा मुझे जब दांत का तकलीफ होता था मैं कृष्णा नगर जाता था. कृष्णा एक डेंटल क्लिनिक था, वहां 1 घंटा 1.5 घंटा बैठता था, मेरा नंबर नहीं लगता था, फिर से मुझे जाना पड़ता था मायापुर क्योंकि मेरी सेवा होती थी. तो मेरा वो जो दांत का इलाज वही रुक जाता, कर नहीं पाता था. तो मुझे महाराज बोले कि जो भी इनका जरूरत है वो करो. तो बोले पैसे मैं देता हूँ. बोला महाराज नहीं, हम करेंगे इनका. तो हमने देखा उनका तो काम शुरू किया. तो एक दिन मैं मंदिर में आया तो महाराज मुझे मिले और मुझे कंधे पे हाथ रख के मुझे बोले कितना समय लग रहा है जनास का काम करने के लिए. बोलो महाराज मैं जल्दी से जल्दी करने जाऊंगा, करूंगा इनका. उनका समय लगने वाला था लेकिन आप बोल रहे तो मैं जल्दी करूंगा. बोले नहीं जल्दी मत करना, अभी 10 दिन में अभी पुणे यात्रा है तो जरा डिले कर दो. बोलो जरा काम जरा बढ़ रहा है, ऐसा करके आप थोड़ा बढ़ा देना, फिर हम उनको पुणे यात्रा लेके जाएंगे. तो मुझे झूठ बोलना पड़ा प्रभु जी को कि प्रभु जी आपका काम जरा और टाइम लगने वाले है, तो मैंने थोड़ा और डिले कर दिया. तो उसके बाद हमेशा मेरे पूछ पड़े थे महाराज की आप जरा देरी से कर रहे हो, डिले कर रहे हो ना. उस तरह से करके फिर जनास प्रभु को पहली बार पुणे यात्रा में लेके आए और फिर वो सिलसिला शुरू हो गया. फिर बाद में फिर हर साल जब भी आते थे तो कुछ ना कुछ कार्य के लिए. नेक्स्ट ईयर फिर पंकज प्रभु आ गए, फिर ऐसे करके शुरू हुआ. और क्योंकि उनका कनेक्शन गुरु महाराज के साथ था, उनका प्रेम गुरु महाराज के साथ था, इसलिए मुझे वो सेवा मिल गई. मेरा कोई ऐसा कुछ क्वालिफिकेशन नहीं है कुछ नरसिंह के दांत बनाने के लिए, लेकिन आई कंसिडर दैट टू बी बिकॉज दे लव महाराज सो मच, दैट्स व्हाई आई गॉट दिस. तब तक क्या हो रहा था, महाराज हमेशा हमारे घर पे आते थे प्रोग्राम के लिए. उसके पहले गिरिराज महाराज का हमने इलाज किया, सब लोग इलाज किए, जयदत्त महाराज के, भक्ति विकास स्वामी महाराज, सबके महाराज जब भी आते थे हमारे यहाँ. एक प्रोग्राम तो महाराज को होता था 1991-92 के बारे में बात करें तो महाराज एकदम फ्री रहते थे. बोलते व्हेन कैन आई कम टू टॉक टू द डॉक्टर्स, हैव अ प्रोग्राम. 4-4 घंटा 5-5 घंटा करके प्रोग्राम होती थी. हम लोग ने रिकॉर्ड भी नहीं किया, सोच के कि महाराज हमेशा आते रहेंगे, ये सिलसिला चलते रहेगा. हमने कोई सोचा नहीं कि ऐसा कुछ होगा आगे. तो हमेशा महाराज थे, लेकिन महाराज कभी भी मेरे चेयर पे बैठे नहीं. एक उदाहरण दिया, महाराज बोले
कि once somebody drilled a wrong tooth and he left his body. मैंने मेरा एक गलत दांत के ऊपर उन्होंने ड्रिल किया चांदी भरी, मैं जरा डर गया। और कभी पूछा नहीं कि आपका चेक करूं क्या कहते। लेकिन जब जनास वो निकल गए वापस मायापुर चले गए तो महाराज मुझे मिले, नाउ दैट योर हैंड्स आर जनानियोस महा, नाउ यू कैन चेक माय। तो थोड़ा मौका मिल गया मुझे और महाराज ने सब कुछ उनका प्रॉब्लम्स बताए। तो अपने मेंटेनेंस फेस पे हर साल आते तो चेकअप करवा थोड़ा कुछ यहाँ हो जाता है इस तरह से। तो महाराज ये बताने का कारण क्या है, क्योंकि महाराज हर एक कनेक्शन देखते हैं। बोले अभी आपका हाथ जनानस महा हो गया इसलिए मैं आपसे करवाना चाहता हूँ। कुछ भी देखते ना कि किस तरह से कोई प्रभुपाद के लिए सेवा कर रहे हैं तो मैं इनके साथ साथ करूंगा, क्योंकि ये प्रभुपाद के लिए सेवा कर रहे हैं। प्रभुपाद मेरा मिशन है, प्रभुपाद के मिशन के लिए मुझे मदद कर रहे हैं। तो फिर महाराज उस दृष्टिकोण से देखते हैं। ही कनेक्ट्स द पर्सन विथ Srila Prabhupada's mission. Yeah, he connects, any person who has done some service for Prabhupada इस तरह से। तो ये महाराज का एक क्वालिटी है कि हर बार एक कनेक्शन देख लेते हैं। एक बार हम बरसाना थे, बरसाना कैंप में, और महाराज हमेशा आते हैं बरसाना कैंप में। तो डेंटल कैंप भी पूरा एक चक्कर लगा देते, देख लेते क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है इस तरह से। तो उनके हाथ में उनकी फीडबैक थी और एक कुछ पुस्तक था जो बहुत उनके लिए महत्वपूर्ण था, काफी कीमती थी उनके लिए। तो जब भी वो डेंटल कैंप के वो परिसर में आए तो उन्होंने मुझे दे दिया ये मेरे हाथ में रखने के लिए, और मेरे तरफ देख के बोले प्लीज कीप दिस केयरफुली। तो मैं वो पकड़ के महाराज के पीछे पीछे चल रहा था। तो महाराज को मैं बता भी रहा था कि क्या क्या किधर क्या हो रहा है, लेकिन साथ साथ में मेरा आधा ध्यान इधर भी था कि एम आई होल्डिंग इट, इधर गुम हो गया तो प्रॉब्लम है। तो 1 घंटा यहाँ घूमे सब कुछ, और फिर बाद में जैसे महाराज जा रहे थे तो मैंने बोला महाराज योर बीड बैग एंड योर बुक, and he looked at it and said thank you very much. तो इससे मुझे ये सीखने को मिला कि जो भी हमें जो सेवा देते हैं ना गुरु, इट्स अ रेस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे उत्तरदायित्व बन जाता है। इट्स अ रेस्पॉन्सिबिलिटी। हाउ केयरफुली वी टेक दैट, हाउ सीरियसली वी टेक दैट रेस्पॉन्सिबिलिटी। हम जो भी कर रहे हैं आज सेवा, ये सेवा जो है हमको गुरु ने दिया है, और गुरु का एक कर्तव्य होता है कि किस तरह से भक्तों को अपनी सेवा में लगाओ, यानी श्रील प्रभुपाद के मिशन में सेवा में लगाओ। भले हम कलकत्ता में हो या बम्बई में हो या कोई जगह पे हो, तो वहां जो भी हम करते हो गुरु के मार्गदर्शन पे हम करते हैं, गुरु के आज्ञा के अनुसार उनके प्रतिनिधि है, उनके मार्गदर्शन पे हम कर रहे हैं। लेकिन समझ है कि ये सेवा जो है गुरु के लिए हम कर रहे हैं। तो जब ये सेवा दी जाती है तो ये हमारा उत्तरदायित्व तो बन जाता है कि हम किस तरह से उसको अच्छे से करें, हाउ केयरफुल वी हैव टू बी। एंड देन एक समय पे ऐसे आएगा वी हैव टू गिव दैट बैक टू सर्विस। हो सकता है सर्विस वो हमारा हमेशा में नहीं हो सकता। आज योग सर्विस हो सकता है, कल दूसरा सेवा हो सकती है, सेवा बदल सकती है, लेकिन हमारा जो संबंध है गुरु के प्रति वो तो होगा ही। लेकिन हम अगर अच्छे से प्रामाणिकता से अगर हम सेवा करेंगे, उसको गंभीरता से हम स्वीकार करेंगे, तो हमको गुरु से जो है थैंक यू सुनाई देगा। ऐसे नहीं कि सामने से आके हमको गुरु को बोलेंगे थैंक यू, लेकिन अंदर से वो सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि आई हैव डन माय बेस्ट, आई हैव डन समथिंग व्हिच इज प्लीज्ड माय स्पिरिचुअल मास्टर। एक बार अपने काउंसलर्स मीट में महाराज बता रहे थे कि whatever the spiritual master gives is a gift for the disciples. It's actually a gift.
अब ये मैंने पहली बार सुना, ये अभी बताया उन्होंने 5 महीने पहले, जब पिछली बार मई में आए थे तो सर बोला कि कंसिडर दिस टू बी अ गिफ्ट, whatever services you are getting or whatever you are able to do on the order of spiritual matter, that's a gift. तो मैंने पहली बार सुना गिफ्ट का क्या बात है, इसमें गिफ्ट क्या है? तो फिर मैं जरा थोड़ा सा सोचने लगा इसके ऊपर और मुझे पता चला कि यस ये गिफ्ट ही है ना। जैसे मानो कि मैं यहाँ आ गया, हाँ, और मुझे राधा राम प्रभु ने कुछ तोहफा दिया और मैंने ये तोहफा लिया, लेकिन कल उनको पता चला कि ये जो तोहफा है कचरे के डब्बे में, तो कैसे फील करेंगे आप राधा राम प्रभु कि मुझे दिया लेकिन वो क्या पड़ा इधर या किधर नीचे पड़ा है, इधर उधर, कैसा फील करेंगे? जब गिफ्ट दिया था उसको हम अच्छे से रखेंगे कि ये इन्होंने गिफ्ट दिया है, उसको संभाल के रखेंगे और फिर उसको हम चिंतन रही गिफ्ट मुझे राधा राम प्रभु ने दिया है, तो फिर एक कनेक्शन हो जाता है कि ये राधा राम प्रभु का गिफ्ट है मेरे पास है, इस तरह से। तो उससे क्या होगा, हमारे एक रिलेशन बन जाता है कि वो सोचते कि उन्होंने गिफ्ट दिया है मुझे और मैंने स्वीकार किया है और मैंने अच्छे से रखा है। तो जो भी हमें जो मिलता है हरिनाम दीक्षा जो गिफ्ट मिला है, जब करने का जो अवसर, उसके अलावा जो भी हम सेवा करते हैं वो अवसर जो है इट्स लाइक अ गिफ्ट। हम जब भी देखते हैं तो महाराज को कभी कोई ना बच्चे ग्रीटिंग कार्ड देते हैं कि टेक दिस, तो महाराज क्या करते हैं ऐसे लेके फेंकते नहीं है, वो अपने रूम में अच्छे से रखते उधर संभाल के, क्योंकि किसी ने प्रेम से दिया है। तो जब गुरु एक प्रेम से कोई सेवा देते हैं उसको गिफ्ट समझिएगा। ये मैंने महाराज को बताया, मैंने उसी दिन हमारा मीटिंग था कोल्हापुर के दीक्षा के लिए, मैं कभी दे रहे महाराज कभी आ रहे हैं, तो बोला महाराज आई लाइक दैट स्टेटमेंट ऑफ योर्स। बोला व्हाट डिड यू लाइक? बोला महाराज आई लाइक द स्टेटमेंट ऑफ दिस गिफ्ट। सो व्हाट डिड यू लाइक आउट ऑफ गिफ्ट? मैं बोला ऐसे ऐसे महाराज, ये मेरा इंटरप्रिटेशन है। तो महाराज बोले यू हैव अंडरस्टूड इट प्रॉपर्ली, ऐसा बोले, आपने सही समझा, ऐसे मुझे बोले और मुझे अच्छा लगा जब क्योंकि मैंने उसका एक इंटरप्रिटेशन दिया। महाराज आप जो देते हो हम गिफ्ट करके उनको स्वीकार करेंगे, तो ये हमारे लिए अच्छा और हमारा कनेक्शन आपके साथ है सेवा के द्वारा। तो आखिर में और एक बताना चाहूंगा, एक लेक्चर में जो महाराज ने एक बताया कि बोले कि एक भक्त को अपने जीवन में स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स रखने चाहिए, यानी जो भी वो करना चाहते हैं साधना, उनका एकदम साधना स्ट्रिक्ट होनी चाहिए, कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और उनके उदाहरण से बताते हैं कितना भी लेट प्रोग्राम भले 11 साढ़े 11 बजे आ जाएंगे ना, मंगल आरती मिस करेंगे लेकिन जपा के लिए बैठ जाएंगे। उनका जगह है मंदिर में, कहाँ बैठते उधर बैठ के एक जगह बैठ के जपा करेंगे। कभी किसी ने पूछा उनको कि महाराज आप वॉक के लिए क्यों नहीं जाते? डॉक्टर ने बोला था कि आपके हेल्थ के लिए वॉक के लिए, बोलते इफ आई गो फॉर वॉक एवरीवन विल कम बिहाइंड मी, सब टेंपल हॉल खाली हो जाएगा। बोले एक जगह बैठ के कितना भी असुविधा होती हो शारीरिक दृष्टिकोण से, लेकिन जपा विल बी देयर, यू नो, विजिबल साधना, स्ट्रिक्ट अपने जीवन में स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स। लेकिन जब भी दूसरों के साथ जब भी बर्ताव करते बोलते हैं यू शुड क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी फॉर अदर्स टू प्रैक्टिस देयर सेवा। तो हर एक व्यक्ति जो है, ऐसे नहीं कि एक लीडर के लिए बोल रहे हैं, हर एक व्यक्ति के लिए हम हमारे जो जीवन में हमको स्टैंडर्ड स्ट्रिक्ट रखनी चाहिए। हमको क्या पता है किस तरह से जप करना है, किस तरह से सुनना चाहिए, किस तरह से बर्ताव करना चाहिए दूसरे से, ये सब जो महाराज ने अपने क्लासेस में बताते हैं। तो व्हाटएवर आई वांट टू टेल माय डिसाइपल्स, मैं जो भी बताना चाहता हूँ मैं अपने क्लासेस में बताता हूँ, तो उसको आप स्वीकार कर सकते हो। तो महाराज को ये मैंने बताया कि महाराज आपने ये स्टेटमेंट बनी थी, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो महाराज ने सुना है, बोला महाराज ऐसे करना चाहिए, हमको हमारे जीवन में स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स रखने चाहिए। वो आपने अपने उदाहरण से दिखाया और किस तरह से आप हमारे साथ बर्ताव करते हो, सो नाइस,
ऑलवेज एनकरेजिंग, हमेशा स्तुति करते हो। अगर कुछ कर नहीं पाते हैं, वो स्थिति पर स्टैंडर्ड तक नहीं आ सकते, तो आप उनको प्रोत्साहित करते हो। बोले कि दिस आई लाइक महाराज योर्स, सो देन ही सेड आई एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम द डिसाइपल्स आल्सो। हमारा नॉर्मली क्या होता है, हम दूसरों को जज करते हैं ना, ये ऐसा नहीं करता है, वो ऐसा नहीं करता है, वैसा नहीं करता है। हम लोग हमारे खुद के जीवन में कैसे कर रहे हो, इसके ऊपर हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ज्यादा एनर्जी उसमें जाना चाहिए। 90% ऑफ एनर्जी शुड गो ऑन दैट, 10% यूज फॉर समथिंग एल्स। हमारा क्या होता है, वी वांट टू सी व्हाट अदर्स आर डूइंग, व्हाट मिस्टेक्स अदर्स आर डूइंग। हमको हमारे ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। महाराज करते हैं, ही विल नेवर इंस्ट्रक्ट। पर्सनल लेवल पे जाएंगे ना, कोई भी जाके मिलेंगे तो उनको बोलेंगे क्या राधा प्रभु आप जप कर रहे हो क्या ठीक से? कभी पूछा किसी को? यहाँ मुझे लगता है वो बॉम्बे में किसी को नहीं पूछा, आप ठीक से जप कर रहे हो क्या? मैं जो बोल रहा हूँ वैसे, मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे कर रहे हो क्या? पर बोले क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर द अदर्स टू प्रैक्टिस देयर डिवोशनल सर्विस। जैसे मंदिर में एसी बना दिया पूरा हॉल, ताकि 2-2 घंटा महाराज लेक्चर देते तो सुनना चाहिए आराम से बैठ के, या कोई वातावरण ऐसे निर्माण किया कि उन लोग अपना सेवा अच्छे से कर सके। तो क्रिएट फैसिलिटीज, तो उसके लिए डोंट बिकम बट स्ट्रिक्ट बिकम स्ट्रिक्ट ऑन। तो दिस इज व्हाट ही शेयर्ड विद अस। हरे कृष्ण। I was 3 minutes late. हरे कृष्ण। हम लोग बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे प्रभु जी माता जी को। एक्चुअली और भी सुनना था, मगर समय थोड़ा कम है हमारे पास, और भी बाकी के कार्यक्रम करने हैं। और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा आचार्य प्रभु को। उन्होंने बोला कि प्रभु जी और माता जी आ सकते हैं, तो सब लोग यहाँ बहुत खुश हो गए, बहुत आनंदित हो गए। इससे अच्छा मैंने सुनहरा अवसर नहीं होगा जो है ना मुरलीधर प्रभु और राधा रानी माता जी से सुनने मिलेगा। हम लोग सीधामा प्रभु किशोरी माता जी यहाँ मतलब कलकत्ता आए हैं, उन्होंने महाराज के गुण कीर्तन किया, और हर साल हमारे द्वारकाधीश प्रभु और विशाखा माता जी आती हैं, और प्रभु जी माता जी भी आए, और हम अनुरोध करेंगे कि बार बार आते रहिए कलकत्ता। कलकत्ता जी एक 5 मिनट, ठीक है, आते रहेंगे, इसी तरह आते रहिए। महाराज भी यहाँ काफी टाइम दे रहे हैं, आपने जैसे बोला, तब पीछे पीछे महाराज के घूम रहे थे, घूमते रहिए। तो हम बहुत धन्यवाद देंगे 3 बार हरि बोल हरि ध्वनि के साथ प्रभु जी और माता जी का। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। और हम इस्कॉन दमदम की तरफ से छोटा भेंट करना चाहेंगे प्रभु जी को। प्रभु जी ने गिफ्ट के बारे में बताया, तो प्रभु जी और माता जी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सबों के आने से ये इस्कॉन दमदम में महाराज जी के प्रेजेंस का अनुभव वो प्रत्यक्ष रूप से है, ऐसा अनुभव हो रहा है। और मुझे याद है मैंने एक लेटर लिखा था कमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, मुझे प्रश्न पूछा ऐसा कैसे एडवांस करना, क्या करेंगे नहीं करेंगे, गुरुदेव को लिखा था मुझे 1999 में। तो गुरुदेव ने आंसर दिया, पहले 2 लाइन फिर लिखा, योर my senior god brother, my senior disciples are qualified to answer your question। क्योंकि तो मुझे एक ये अनुभव हुआ कि I superseded them, मैंने किसी को बोला नहीं, बस क्योंकि मुझे email ID मिला था, I thought I will directly contact my guru and I will write a letter to him and get an answer, but मुझे वापस भेज दिए, बोले कि पीछे जाइए और अपने गुरु भाइयों के पास जाइए, वहां से आंसर लेके आइए। उनको मैंने बताया आप उनसे सीखिएगा। तो हर समय गुरु महाराज लोग प्रेजेंट नहीं होंगे, मगर उन्होंने जो अपने सीनियर डिसाइपल्स को दिया है
उनसे हमें शिक्षा मिल सकती है, और ऐसा हमको आज ये अनुभव हो रहा है यहाँ बैठ के। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे प्रभु जी माता जी को। कल से वो एक्सटेंड किए जा रहे हैं और वो आए, बार बार आएंगे। और मैं आचार्य को भी बोलूंगा कुछ बोलने के लिए। हाँ ठीक है। उसके बाद भी फिर भी आज क्या हो गया, नंगमोहनपुर ने लास्ट मोमेंट में ISKCON न्यू टाउन का प्रोग्राम डाल दिया ग्रुप्स में। तो मैंने देखा कि अगर सब उधर चले जाएंगे तो मैंने अपना प्रसाद का मेनू डाल दिया सबको। बोला सब इधर आने का। आचार्य तो ने बोला कि ठीक है प्रभु जी माता जी को लेकर आता। बोला हाँ। I request Acharya also to please share his offerings. One share. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। Maharaj loves Tamal Krishna Maharaj very much. So we see he planted that Tamal tree in Chowpatty, and he had that small beautiful festival. And Maharaj says always that whenever I see Anand Mohanpur and Vallabh Charanpur, I see them as representatives of Tamal Krishna Maharaj. And I see Maharaj loves them so much. Like his heart is, as soon as he sees them, he becomes so blissful, so happy, so ecstatic. You know? So in my experiences of so many years, as soon as I go near Maharaj will always inquire, how is Anand Mohan, how is Vallabh Chaitanya, how is Radhanath. So Maharaj loves them very much. And what can I say of Radhanath too? He has worked so hard to fulfill practically each and every minutest desire of Maharaj. Our Albert Road temple, practically each and every nook and corner and inch has been renovated. Every time Maharaj will come, he'll take this, that, no? And whole year will be, no, drum. When Maharaj comes, there will be inauguration. And Maharaj had such a great desire to get a proper birthplace, and practically it was impossible. And finally, on my 25th anniversary, by so many years of efforts of Radhanath, Anand Mohanpur, Vallabh Charanpur, finally that place was got. And Maharaj was so ecstatic. I remember when we had just taken possession of that place. Radhanath was there in New Town. Maharaj called, today itself you should go and take the position. I said, what, Maharaj, what today? You know, he said, no, before sleeping you have to make sure. So he just ran from there, somehow then came there, and it was so difficult. Somehow he, in night only, shifted all of them, you know, and took the possession. And when Maharaj heard that we have got by Maharaj, was so excited. Next time when he brought Giriraj Maharaj. By the way, Giriraj Maharaj also Krishna will come in January. He's writing a book about his travels with Prabhupada and also his service in Calcutta and his visits to Calcutta. So next time Maharaj came with Giriraj Maharaj, and I saw they went to Ultadanga. That time Ultadanga was so dilapidated and there was no access to that this thing also. Somehow, so they went there
and then went to Prabhupada birthplace. It was like a slum, and very, from material point of view, very difficult to appreciate. And after seeing that, they came and, they were, I think, 303. I saw. Giraj Maharaj was 303. So, Radhanath Maharaj was also there. So I went there, and both of them were talking, and they were so ecstatic. And hours together talking, night 11, 12 o'clock, they're just, so happy that we have got proper birthplace, biological birthplace, that our Toliganj, and spiritual birthplace, Radhanath. And they were so much happy, and just, so for me, when I saw it, was just like a slum area kind of, so, very dirty, I was not understanding value, but then I saw hours and hours, they were so ecstatic and so blissful, and so happy and discussing about it, So, actually, Maharaj loves Prabhupada very much. So, anything connected to Prabhupada, very dear to heart. So, this Prabhupada birthplace we received, that was, amazing. And then Ultadanga, last time when we visited, he was, Maharaj, whatever comes, he just pushes like anything till you do it. And then Radhanath worked so hard to get that renovated. And Anand has made it so beautiful, interiors and all these things. And Maharaj's desire was that, they should become a place where, all Gaudiya Vaishnavas come. It can be placed to unite all Saraswat Gaudiya family. He said, this is spiritual birthplace of all Gaudiya Acharyas. The proper spiritual birthplace there. Similarly, all different Gaudiya Maths are there. Everybody's Acharyas have became Krishna Kant there. So Maharaj, we should have that place can be a place to unite all Saraswat Gaudiya family. And I see that Anamok is so very expertly cultivating all this, and fulfilling the desires of Maharaj. Even Jayabada Maharaj, last time actually when he was extremely sick, then and then after that when he became a little better, then he wrote, I got a dream. He said in dream, Prabhupada came. And then he said he instructed, Prabhupada had already given instruction that he should, unite all Saraswat Gaudiya family. And he said, again, Prabhupada, I received an instruction that we should unite. We should do something to, unite all Saraswat Gaudiya family. So Jayapal Maharaj was also so happy last time he came, and personally, though it was a last moment, he had so many plans, but when it came that Ultadanga, the deities, Gandharva Girdhari had to install, he came, he was so happy. So I said this, Radhanath has received super unlimited blessings, As soon as you take name Radhanath Maharaj, you are so ecstatic, Anand Maharaj, he knows how to please Maharaj. Every time he comes, Maharaj, Anand cooks such nice Bengali items, and such beautiful. I have never seen, such elaborate prasadam arrangement, and not only beautiful prasadam, but the way presented. So I'm telling what Maharaj loves, and how these devotees have really conquered the heart. Like definitely, these are also another reasons why Maharaj keeps on coming. Like the way prasadam, Anand makes elaborate arrangement with minute details, and then he will create environment also. While taking prasadam, he will not allow anybody to come, and then make sure that Maharaj is very peaceful, and little soft music, and then he will speak wonderful pastimes. He'll talk about Gurudev Tamal Krishna Maharaj, and he'll make him so happy. So, and Vallabh Janpur always assisting in all the arrangements and serving. So this actually is also what draws Maharaj every year after year to come in. If there are no loving devotees, then so yes, Maharaj definitely loves Prabhupada, but also I see that these devotees like Radhanath, and also other devotees actually,
very, very committed to please Maharaj. So I feel personally very honored. Like we see, Chaitanya Mahaprabhu always used to be standing near Garuda because his mood was that Garuda is very dear to Jagannath. And if I'm just near Garuda, then Jagannath will put some glance on me also. So similarly, I also feel if I just be near these devotees, wonderful devotees, maybe I will also get some glance of Maharaj and get his mercy. So I will just conclude by telling, because prasadam is the main attraction. I don't want to delay, but still I will tell one pastime and conclude. Okay. Actually, there are so many things, but we just tell one. I remember last time when Guru Maharaj came from the airport. I will cut short and move fastly, okay? And then we went and to guest house reception. So many devotees were actually waiting there at reception. And I knew devotees are having expectation that at least Maharaj should say Hari Bol. Actually, Maharaj was very tired, but still, when many devotees were waiting, there were brahmacharis were there, and many other devotees. So when I went and I saw they are all waiting and they're waiting for a long time. Then I just introduced Maharaj because they are waiting, I said, Maharaj, he's so and so Prabhu, he's doing this services. Then I said, Maharaj, he's so and so Prabhu, he's doing this, sir. And introduced all the devotees. And Maharaj was so happy, immediately folded his hands. And then he had a stick, ordinary stick, which he used to walk around in Govardhan village. So he had brought it on his flight also. It was in his hand also, So immediately with that stick, he touched the feet of, all the devotees. And then immediately he put on his head. So all devotees were, it was like a shock for them, that Maharaj taking dust of their feet by, dust, and then you put that end of that stick on his own head. Devotees immediately, they were like shocked. Immediately everybody offered dandavats, And then Maharaj started laughing. He said, all devotees have been asking, what is the purpose of this stick? So he said, this is the hidden purpose. Take the dust of lotus feet of all devotees. And then afterwards, there were a couple of events and a couple of days. And another day, then after the program, Maharaj came back and then we entered the lift. When Maharaj entered the lift, and then Dawjendra Babu entered the lift, I entered the lift. Then there was lift man's, that seat was there. So Maharaj sat there. And Maharaj had that stick. Somehow in that, always Maharaj was carrying that stick. Maharaj had that stick. So Dawjendra Babu just said, Maharaj, that day, first day you came, and you took the dust of feet of all devotees. It was very embarrassing for us actually. He said, ideally, we should be taking dust of your feet. As soon as he said like that, he took the stick and he touched my feet and put on his head. And then he took that stick, touched his feet and put on my head. So immediately I could understand that what is that moment when I understood what Maharaj is. What I understood from that was Maharaj says, okay, it may be easy to say that give me dust of your feet to spiritual master. But actually meaning of taking dust of spiritual master lotus feet means taking dust of lotus feet of devotees. And taking dust of lotus feet of devotees means to serve them, to cooperate with them, humble oneself, keep aside one's our false egos and ulterior motives and cooperate for the pleasure of spiritual master. So this is actually always one important teachings and emphasis of Maharaj. We should try to become servant of devotees, and that will please spiritual master and Krishna very much. So on this day of Vyas Puja, I would like to pray that I can become a little more humble, a little more free from false ego, a little more free from
my ulterior motives and serve devotees, cooperate with devotees and try to please him. Please Srila Prabhupada and Guru Prabhupada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. His Holiness Radhanath Swami Maharaj ki Jai. Radhanath Swami Maharaj Samity's second Vyas Puja Mahotsav ki Jai. Hare Krishna. Thank you very much, Acharya Prabhu. I remember one incident. मुझे एक छोटा ये याद that we went to GV. फरवरी में हम लोग GV गए 2019 का, और हम लोग मतलब उस दिन ये था इनिशिएशंस. सो मॉर्निंग में सबको वाउज लेना था, इवनिंग में महाराज बीट्स देंगे. हम लोग सब बैठे थे और हम लोग प्रसाद पा रहे थे, तो महाराज आ गए. GV में एक हट है, अंदर जाते हैं. वृंदावन कॉटेज beside that, I think. हम लोग सब खड़े हो गए, तो महाराज जाके देख के ऐसे करके सब, और हम लोग सब पिज्जा खा रहे थे, पिज्जा. तो महाराज ऐसे देख के बोले, ईटिंग बंगाली प्रसाद हो, मैंने सरकास्टिक. तो फिर मेरे को अनंगमोहन को बोले कि both of you come to Mayapur. I will come during GBC meetings and both of you cook for me. मेरे को कुकिंग नहीं आता है जनरली इतना, but Anandamon I assist always. Anandamon said, therefore I'm recollecting that. तो हम लोग मायापुर गए, हम लोग गए और अनंतमोहन भीमसेन नाग से संदेश बहुत फेमस है, वहाँ का स्वीट्स. और नवद्वीप में है ना, नवद्वीप का मिष्टी दही जो तमल कृष्ण महाराज को बहुत पसंद है, एक दुकान है वहाँ से मंगाए. और फिर मतलब महाराज जाते ही हम लोग चले गए किचन में. वहाँ एक सुबह कृष्ण को उनके यहाँ किचन में जाके हम लोग है ना कुकिंग, तो आई वाज असिस्टिंग. और क्या हो गया है ना, राइस, बोला राइस बना ले, मतलब तुम ही बना, बोला तुम कुछ तो बना लो राइस. तो राइस गीला हो गया थोड़ा, तो मैं बोला गीला हो गया, जाके ब्रह्मचारी आश्रम से लेके आते. ब्रह्मचारी आश्रम बोला ऑफर नहीं है, नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिला. तो फिर भी मैं बोला कि ठीक है ऑफर कर ले, बोला हाँ करके ले जाए. बोले ये मोटा राइस था, वो ऑफर वो ले लो. तो मैं ले गया. फिर हम लोग पहुंचे तो महाराज जीबीसी मीटिंग्स के बाद आए. हम लोग अपना उनके रूम में, सीनियर ब्रह्मचारी आश्रम मायापुर में, वहां रूम में गए. और महाराज बोले वेट अ मिनट. तो महाराज वॉशरूम जाकर के फिर ऊपर का एक लेक्चर चला गया. मतलब लेक्चर चला गया तो खाते वक्त वो सुनेंगे. हाँ, तो फिर हम किसी राधामोहन को सामने सर्विंग करने लगे, तो वो मोटा राइस दिए. तो बोले कि नहीं चाहिए, बोला बाबा के गीला राइस आएगा. तो बोलिए तो ही टुक इट. और एक दाल भी बनाया था मैं, मुझे नहीं, अनंगमोहन को तो मतलब, तो अनंगमोहन को बाकी सब आइटम सर्व किए. महाराज को बहुत है ना, महाराज was relishing that prasad. महाराज बोले कि है ना, प्रसाद is eating me, I am not eating the prasad. तो बहुत humorous है, बोलते प्रसाद is eating me, I am not eating the prasad. और फिर अनंगमोहन को बहुत ग्लोरीफाई किया. तो ग्लोरीफाई करके मुझे देखे, बोले you don't worry, whenever I will glorify Anandamohan means you are included in that. तब से मेरे को पैसिफाई हो गया कि अनंगमोहन को कहीं भी कोई ग्लोरीफाई कर रहा है तो गलत जितना इंक्लूडेड. स्पेशली जब महाराज बोलेंगे तो बोले कि ऑलवेज आई विल इंक्लूड यू. सो व्हेन आई से अनंगमोहन मींस यू आर इंक्लूडेड, डोंट वरी. तो थैंक यू महाराज. तो महाराज ऑलवेज वेरी वेरी लविंग. वी लॉस्ट गुरुदेव at very early age and Maharaj gave us shelter and Maharaj really showered his mercy on us. And हम लोग बहुत बहुत आभारी हैं आप सबों के, आप आए इस ISKCON DUMDUM मोती झील में, विशेषकर इस ग्रेस राशेश्वर प्रभु, हमारे सबसे वरिष्ठ वैष्णव, हमारे मंदिर के बहुत पुराने, आज के सीनियर. हम लोग के मतलब जो बोले, हम लोग कुछ भी ब्रह्मचारी को होता है हम लोग उनके पास जाते हैं, और वो हमेशा सदा सेवा किए भगवान की, मगर 1-to-1 इतना अच्छा हमको वो काउंसिल करते हैं.
और जाके हम घंटों बैठ जाएंगे उनके रूम में और वो बताते रहते, इतना प्रेम से हमें बताते। वॉक करते करते अगर उनके साथ हो लेंगे, कुछ पूछेंगे, it gives us so much time. I'm very grateful to each one of you, and I also am grateful to Navagendra Poo for coming, Palak Prabhu, all the brahmacharis from the temple. I'm very, very grateful. And especially I would like to thank from the core of my heart His Grace Kanai Natsala Prabhu. Prabhuji, you can see a lot of renovation work, lot of things, and I keep on traveling. And also I like to thank Ritesh Prabhu from the core of my heart. The three of us full-time here, we are serving. So Kanai Natsala Prabhu has done all this renovation, painting. You can see the whole rooms, all the walls. He made this place available for us so that Maharaj can appear us today. Can come forward. Come, Ritesh Poo, because I'm not, there was like, their tireless hard work. They worked very, very hard. Very, very, in fact, sleepless nights. So, I request Kanai Natsala Prabhu to come forward. Also, Ritesh Prabhu, they were, come, Kanai Natsala. Come. Aja. It's getting late. I was in Vidyagar based in Bombay. I was regularly going there doing classes. I was seeing the faces very familiar, but I did not understand who this person is. So that's why you try to remember it. Remind me. Very good. Ritesh works very hard, so much services they are doing. This is like I am becoming speechless to sufficiently thank them today for the wonderful services. लोग 2020 में ये जगह मतलब 17 में हमको मिला था ये, so we came here, but 2020 we finally shifted and His Holiness Bhakti Charu Swami Maharaj came 14th March 2020 और उन्होंने ये प्रोग्राम किया और उसके बाद से ये जगह माने जंगल था एक तरह से और कुछ भी नहीं था, तो इट वाज धीरे धीरे ये जगह बहुत सुंदर से डेवलप हुआ। विदित प्रभु, सुशोभन गौरांग प्रभु, गोविंद, चैतन्य माधव प्रभु, इन सब ने मिलके बहुत सुंदर ढंग से इस जगह का विकास किया। और साथ ही मैं अपने हृदय से भक्तों का धन्यवाद देना नहीं भूलूंगा, हमारे जो कांग्रेगेशन टीम है उनका, विनोद चोपड़ा प्रभु, संगीता चोपड़ा माता जी, जयदीप प्रभु, रूषा माता जी, सदाशिव सीतानाथ प्रभु और सारे हमारे आउटरीचेस, हमारे जितने भी कमिटी मेंबर्स हैं। ये जो फेस्टिवल्स हम देख रहे हैं, हम लोग कुछ नहीं करते जनरली, मैं कुछ नहीं करता हूँ, और जितने भी फेस्टिवल कमिटी, इति माता जी आई हैं, अंजना माता जी आई हैं, और है ना ज्योति माता जी हैं, संगीता विश्वास माता जी हैं, कितनों का नाम लेना है मुझे, मैंने तेरा लिस्ट ऑफ नेम्स, दे वर्कड सो हार्ड। अभी गीता जयंती गई और गीता जयंती में इतना मेहनत किया हम लोगों ने वो हम लोग की जगह बाहर देखेंगे, बहुत अच्छा। अभी they celebrated this festival and always they come forward and they work so hard, so it's a teamwork I have seen,
अकेले हम कुछ नहीं कर सकते। और महाराज जी से मैंने ये सीखा है। महाराज गुरुदेव ने बोला था, जैसे ने बोला कि महाराज जी से शिक्षा लेना। महाराज जी के पास हम लोग गए थे 2002 में। महाराज बोले थे कि हम लोग बोले महाराज हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग नहीं जाएंगे कलकत्ता। तो महाराज बोले नहीं, कलकत्ता जाओ और यू मेक अ ब्रिज बिटवीन मुंबई एंड कोलकाता। एंड महाराज सेड आई विल कम डेफिनेटली। एंड महाराज ने वो प्रॉमिस अभी तक फुलफिल किया है महाराज ने। और महाराज के आशीर्वाद से ये जो ब्रिज बना, अभी इतना सुंदर, अभी कोलकाता का प्रचार ऐसा फ्लरिश हो रहा है। मैं देख रहा हूँ सभी साधु संत वैष्णव इतनी कृपा बरसा रहे हैं। तो कोलकाता इज अ प्लेस ऑफ हैपनिंग। Something is happening in Kolkata. I'm sorry if I have not taken some names I forgot. Meena Mataji and other devotees are there who are working very hard in the kitchen. They are maybe listening, I don't know. They had a last late night yesterday. Husband लोग मतलब यहाँ है तो बता देंगे। मैं तो लोग so they worked very very hard. I'm very grateful to each one of them. Devendu Prabhu is there, Munmun Mataji and other Arindam Prabhu, Gopi Mataji, so many devotees. So basically they are working so hard and this place is flourishing. Janivas who came, I tricked him to come here. So I went and asked in front of Radha Govindaji, Prabhu, can you please come to Motiji? How far it is? Oh, nearby, Prabhu. बोला nearby, it is on the way to Maya. Yes, Prabhu. तो मिलन माधव कुछ बोलने वाला था, मैंने हाथ पकड़ लिया, मिलन माधव का बोला हाँ ऑन द वे है एक्चुअली, झूठ भी नहीं। तो प्रभु बोले ठीक है, आई विल कम। क्योंकि पहले 3 बार पूछा तो मना कर दिया। आई फील डिजी। अभी वो बहुत ऐसा बॉडी बहुत फ्रेजाइल हो गया। आई नेवर फोर्स्ड हिम। फिर जाके बोला तुम आए तो ही वाज सो हैप्पी। ही वाज चैंटिंग, ही वाज डांसिंग, हाथ ऊपर करके नाच रहे थे। फिर वो जाके हम लोग ने हमारा रूम है वीआईपी लॉन्ज में, उसमें बैठाया। बोला कि वल्लभ चैतन्य सो मेनी पीपल बी रेडी नाउ। और बहुत सारे हम लोग सब दे टीम मेंबर्स बोले इतने लोग आएंगे संभाल नहीं पाएगा तुम लोग, और इतने लोग आ रहे हम संभाल नहीं पा रहे, इतने लोग आ रहे हम संभाल नहीं पा रहे। तो ये वैष्णवों की कृपा से और महाराज जी की कृपा से संभव है। महाराज जी की एक बात याद आती है, जैसे आनंद मोहन को ने बोला हम लोग गए थे ब्रह्मगिरी माता जी के यहाँ सर्विंग करने। हम लोग बोले कलकत्ता में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। तो महाराज देखे हम लोग को, फिर महाराज बोले डिटर्मिनेशन एंड कंसिस्टेंसी इन कृष्ण कॉन्शियसनेस इज व्हाट मेक्स योर लाइफ सक्सेसफुल। जस्ट कैरी ऑन एंड यू विल सी वन डे होल कोलकाता will dance and chant in ecstasy and thousands of devotees will be made, and that is correct today. We can see today that is happening in Kolkata. All the Vaishnava mercy. And not like to take much time, and like to thank each one of you from the core of my heart for coming today to make this event a very successful event. I'm very very grateful to all of you for being here. Thank you very much. Hare Krishna. So we'll proceed with our another event. Now there will be a Pada Prakhalan, as we say, like we do a Abhishekam of lotus feet of spiritual master, remembering his lotus feet, and we'll request devotees to do kirtan. Our Ayan Prabhu is there? No? We can call him, and Kanasala Prabhu, can you do that? I'll ask Mullidhar Prabhu and Radhanath Mataji to come. They can Kanasala Prabhu will be the Purohit, you both become the Jajama. And, come now, you came, it's our good privilege, and all of us will follow you, don't worry. So, and after that we will have a Puspanjali, Aarti and Hare Krishna.
Anyone who can do some kirtan? Devotees also, I remember they were doing the seva. Sudevi, Jamuna Devi Mata. इसी चला वो একটা দিক अगर आपको আরেকটা আছে ছেড়ে দিন আরেকটা আছে हरे Please sit down.
व्यास पूजा महामहोत्सव की जय। राधानाथ स्वामी गुरु महाराज की नमो विष्णुपादाय विश्वपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वती गौरवाणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 Hare Krishna, Hare Krishna.
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare
तो अभी हम पुष्प करेंगे। सब लोग पुष्प ले सकते हैं और जो हाथ में आपको पुष्प मिल रहा है 3 बार ऑफरिंग करना है। ओके। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं
श्री राधा कृष्ण पदान सदन ललिता श्री विशाखान्वितांश नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी नामिने श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्य उज्ज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुगभक्तिद श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्ध अपसिद्धांत द्वंद्वहारिणे नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये विप्रलंब रसाम्बोधे पदाम्बोजाय ते नमः नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौर आविर्भाव भूमिस्त्वं निर्देष्ट सज्जन प्रिय वैष्णव सर्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते जयतां सुरतो पंगो मम मन्दमतिर्गते मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहनो दिव्याङ्गृन्दारण्यकल्पतरुमाता श्रीमद् रत्नागर सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा शीत गोविंद देवौ निष्ठानिधि सेव्यमानो स्मरामि श्रीमान् रासरसारम्भे वंशी वटतटस्थिता कर्षं वेणु स्वनैर्गोपी गोपीनाथाय श्रियस्तुना तप्त कांचन गौरांगी
राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते राधानाथ स्वामी इति नामिने एष पुष्पांजलि समर्पयामि। नमः ओम विष्णुपादाय प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते राधानाथ स्वामी इति नामिने एष पुष्पांजलि समर्पयामि। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते राधानाथ स्वामी इति नामिने जय श्री राधानाथ स्वामी महाराज की जय। स्वामी 72nd व्यास पूजा महामहोत्सव की गौ प्रेमानंद। वंदे गुरु चरणारविंदा महाप्रभु की नृत्य देखा वंदे गुरु चरणारविंदा
तस्या भक्ता शनियुञ्जतो वन्दे गुरून् श्री चतुर्विधात्रे भगवत् प्रसादो साधन देता हरिभक्त संगा एतैव ते भजत सदैव वन्दे गुरून् श्री चरणारविन्दा श्रीराधिका माधवयोरपारा माधुर्यलीला गुणरूपना वन्दे गुरून् श्री चरणारविन्दा निकुञ्जयन् रतिकिरीटे यायानि वेदोक्तेरपेक्षणीया वन्दे गुरून् श्री चरणारविन्दा शास्त्रे उक्तस्तथा यतएव श्रद्धेति किन्तु प्रभोर्य प्रिय एव तस्य वन्दे गुरून् श्री चरणारविन्दा यस्य प्रसाद नगते पुत्रोऽपि हायस्वांसस्यं व्यासस्ते शान्तं वन्दे गुरून् श्री चरणारविन्दा कृष्णाय भूताले राधनाथ स्वामी नामिने विष्णुपदाय कृष्णाय भूताले विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूताले
Vedanta Swami te namine Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutane Saraswati Deve Gauravani Prachare Nirvishesha Sanyavati Asatare Sadare Saraswati Deve Gauravani Prachare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Radhanath
जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक श्रीमती शिवानी देशेसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शैलदास ठाकुर की जय। वेद से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। ब्रजभूमि वृंदावन धाम की जय। मथुरा धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। कोलकाता धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा मई यमुना मैया की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंद। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Guru and Guru.